प्रोफेशनल कोरियर्साचे नरेंद्रना देखोर येवका तशेंच हेब्रीचे नरेंद्र नायकांना तुम्ही येवका सोमेश्वर रागण्णा हांगा काही आसाची तुम्ही पुरा मस्त आमका विंगड विंगड रितीर सपोर्ट दिताची जाल्यार येद्रा येनाची देखोर तुम्ही येद्रा येवका ऑर्बिट माधव कामताना तुम्ही हांगासल्यार देखोर स्टेजावेर जॉइन जावका म्हणून निमगून घेता आसा या संदर्भेरी आमका इतले चंद ग्राउंडा व्यवस्था जावक जाल्यार बोटिंग हे पुरा करक जाल्यार आमकां सहकार दिला तसले सह्याद्री कॉलेजाचे श्री मंजुनाथ भंडारी हांकां आमी मस्त धन्यवाद या संदर्भेरी सांगता आसाची तशेंच हांगाचे ट्रस्टी देवदास अण्णा हांकां आमी मोगान धन्यवाद या संदर्भेरी दिता आसाची पुजलोना ग्रुपाक रिप्रेजेंट करचे सुरेश पैमाम तशेंच रामदास पैमाम तुम्ही दैकोर वेदिकेवेर येवका तुमगेल पूरा सहकार आशिल्ले निमित्ताची आमगेल इव्हेंट प्रति वर्ष ग्रँड जाता आसा आता ग्राउंडार दोन टिमांचे ऑल द बेस्ट सांगचे विषय तशेंच मेन स्टेजाचे येद्रा आशिल्ले दैकोर स्वल्प सायडार बुका म्हणून आमी निमगून घेता आसाची आता दोन्ही टिमाचे RCB तशेंच मल्पे युनायटेड टॉस आता जाता कोण म्हण पळया चेतन कामत देखोर पिच्चाला येवका तशेंच कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन हाजे कोणें असल्यार पूर जनांनी येवका मेंबर्स आना आता फायनल मॅचाचे टॉस जावचार आसा चेतन कामत खंय असल्यार स्टेजाला येवका म्हणून पिच्चाला येवका म्हणून निमगून घेता आसाची दोन टिमाक ऑल द बेस्ट आता सगळे KSA देखून आमी सांगता आसाची RCB फर्स्ट टाइम रिजिस्टर करून फर्स्ट अंतुची फायनल साकायला मल्पे युनायटेड फायनल साकायला आसा दोन्ही टिमाक आमी कंग्रॅच्युलेशन्स ह्या टायमार सांगता आसाची अँड ऑल द बेस्ट विश करता आसाची टायटल ट्रॅक प्लीज GPL theme song please DJ Smith yeah 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 ha yeah 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 ha yeah 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 ha yeah 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 ha aponu gevnu yore tanka vargi aponu gevnu yore tuva vargi chiles vimana mele lagi lagi yeah yeah गमत रात्री पल्ले गौजी मस्ती come on guys धकया time is right happy weekend enjoy Korea thank you DJ Smith आता नॅशनल अँथम म्हाका पुरो जनांना उठान रबका म्हणून निमगून घेता आसा फायनल फुडें नॅशनल अँथम आतां जावचार आसा देखोर पुरो जनांनी उठान रबका
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता के वंदे वंदे वंदे। दोन टीमाच्या कॅप्टन काही एदरा पळयता आसा RCB तशेंच मल्पे युनायटेडाचे टॉस जावचार आसा। आय रिक्वेस्ट द ऑफिशियल्स अंपायर तशेंच शिवण्णा तुम्ही एदरा येवका म्हणून निमगून घेता आसा। मल्पे युनायटेड आणि RCB टॉस जावचार आसा। RCB कॉल करता। टेल इज द कॉल. इट इज टेल. RCB बॅटिंग चूज केला हांगा कॅप्टन कोरनेत्र येवका म्हणून निमगून घेता आसा। कॅप्टन उरलायना जाल्यार लास्ट मॅच फायनल्सांत उरलो म्हणून रिक्वेस्ट करून घेता आसा। बॅटिंग चूज केला इथे बॅटिंग चूज केला कसं स्ट्रॅटर्जीस की ग्राउंडाचे इतली मॅच खेळून फर्स्ट टाइम एक तुमगेले ओनर्सान पूरा तुमगेले बिलीफ करून फायनल्सा पावलीच कसं स्ट्रॅटर्जीस वय स्ट्रॅटजी म्हळ्यार तांची नाईट ड्यू पडल्यार मागीर मागीर बॉल ट्रॅव्हल जायना। आतां ड्यू थोडे उण आसता तशी फर्स्ट बॅटिंगान थोडे बॉल ट्रॅव्हल जाता चेजिंग मागीर प्रेशर आसता कितली म्हळ्यार थोडे रन आयला तशी ताजेकोसकर फर्स्ट बॅटिंग घेतलें आणि फर्स्ट टाइमाची फायनल्सा पावयले लायक परफॉर्मन्स टीमाचे कितली खुश आसा कॅप्टन जावन टीम लीड करचे। टीम लीड करची म्हळ्यार पुरो एक आमगेले चड जेवन ಒಟ್ಟು खेळटली आशिल्ली तशें आमगेले कॉम्बिनेशन वरें लायक आशिल्लें पुरे उलोवन घेवनूची एकलेले डिसिशन न्हय टीम डिसिशन तशी लीड हांव केलेलो म्हणून न्हय पुरो जनांना डिसिशन घेवनू केलेलें। थँक्यू सो मच। तशेंच माल्पे युनायटेडाचे कॅप्टनान येवका बेजारस की टॉस सलवलेले आम्ही गेम कशी आमकां येद्रा मेळटा की त्या गेम आमी पुरो स्कन सवाल मेळटा की तकीत आमी प्लॅन करता वच्चे पळया कसं जाता मग मॅचा काही पुढे तुम्ही बॅटिंग येवका म्हणून लेखील की खंडीत ना आमी फिल्डिंग करच्यान तो आशिल्ले पळया लायद दोन टीमा काही जावका जाल्यार मेळ्ळा बेस्ट गेम जेवो लायक फायट आसा दोन टीमा काही ऑल द बेस्ट अँड थँक्यू सो मच स्पोर्टिव्ह जावन खेळायच। थँक्यू थँक्यू थँक्स अलॉट। आता मॅच जावचार आसा दोन टिमाच्यांनी जाल तितली बग्गी ग्राउंडाक देवंका म्हणून आमी निमगोन घेता आसाच। थँक्यू। Over to the commentary box. Thank you. 7 over match. दोन टीमा काही उडगास आसा. It's a 7 over match. We request both the teams to give their playing 11 to the commentator's desk and also send their 12th man. So hello and welcome back to this Sahyadri College venue
the mega final of Arch Pharma Labs GPL Utsav GPL Trophy 2023. The countdown for final has begun now. We will come to know who will crown the GPL Trophy 2023. Whether it is Royal Challengers of Balambettu or whether it is a team from Seashore, that is United Malpe. Must-win situation here for both the teams. Both the teams are sailing on the same boat. We can't say exactly which team will win this match because both the teams have got very, very experienced cricketers. So this is going to be an exciting match, and I think it has a real close finish. So Kodial Sports Association. Kodial Sports Association चे अध्यक्ष श्री शिवानंद शणे यांना देकोरनं तुम्ही येऊन वेदिकेवर बैसकोमण मी निमगुण घेत असायचे तसेच विजेंद्र भटमाम तुम्ही वेदिकेवर येऊ का This tournament is well organized by Kodial Sports Association of Mangalore. I request the 12th man of both the teams to come to the commentators box immediately. Your presence is required here urgently to assist our scorer. We have received the key of a two-wheeler. It is KA19ES7009. The owner of the vehicle can come to the commentator's desk and collect the keys of the vehicle. KA19ES7009 blue color Suzuki Access. Well, the news from the center is Royal Challengers of Balambettu team, after winning the toss, they have decided to bat first. Meanwhile, the players, the fielders of United Malpe are having a great discussion. They are in the middle to set their field placement. Let us see what strategy they will adopt now. RCB 12th man, your presence is required here urgently. Wherever you please come to the commentators box. So the two umpires are slowly marching towards the track here. Sri Niket and Viraj. एक announcement असा main stage एदरा दिसता शे खाली जागो कसा असकी players का announcement त्या खाली जागा भितरी कोण 6 आणि 4 मारतकी तंक पूरा जना काही 5000 रुपये मिळतास हे दित्तश गोकुलदास भंडारकरना भंडारकर कंस्ट्रक्शन सदकोनो मेन स्टेज दृश्य खाली जागा भितरी 4 जो 6 आयलारी every player will get rupees 5000. So terrific atmosphere here today at Sahyadri College ground. Crowd is more than expected. The GSB community spectators have come in large number to cheer the finalist here. So let us see who ends the crown of GPL 7. We'll come to know who is the champion very soon. Royal Challengers Balambettu represented first time in this GPL. The team owners Arvind Pai, Sandeep Pai, Srinivas Pai, Sunil Pai are the team owners of his team, and under the captaincy of Deepak Kamath, these 4 team owners have formed a new team of young players to represent the GPL for the first time, whereas Malpe United is the team to play in this GPL for the first time. Subramanya Bhandarkar, Anil V. Kamath, Pawan Kini, Jayant Naik are the team owners, and Sunil Shenai is the icon player. So everything seems to be ready here. We have the green signal there by umpire. Meanwhile, I have got Mr. Amit Pai is with me in the commentary box, who is going to start the commentary of this final match.
Umpire says play. We are ready to play the finals. It's the two teams, the Malpe United and the Royal Challengers Balambettu. The RCB team has won the toss. They've elected to bat in this all-important mega final. It'll be Shashank and Ratan to open the innings for the RCB. It's Shashank, the left-handed batsman whom we have seen to play long innings in this tournament so far. It's a 7 overs match. Sachin to open the attack. Good delivery there. Big appeal from the bowler. Umpire says not out. It's too high. It's the impact is quite high on the legs of the batsman, and hence he says not out. So a dot ball to begin with. It was in the arc for the batsman, but the batsman failed completely to connect with the ball, and Sachin with that delivery bowls a dot ball. Second time Sachin now. Bowling Shashank, full toss, takes the outside edge of the batsman, and they've completed a single. With that single, that's the first run of this mega finale of the GSB 2023 Utsav. The score moves on to 1 after 2 deliveries of the first over. It's a 7 overs match between the Malpe United and the RCB. So because it's a right and left hand combination, it needs a regular changing in the fielding placements. Remember, it's a 2 overs power play. Only 2 fielders allowed outside the inner circle. Hence, for the right-handed batsman, the fielders are generally kept on the leg side, and that's the long on and the mid-wicket region generally. That's what Sachin has placed for Ratan. We have seen Ratan in the semi-finals smashing those 2 sixes over the leg side. Here he is facing Sachin. Good delivery, that's on the offside, just over the fielder's head, and they've completed 1 run. Again, Ratan must have had his heart in his mouth when he just mistimed that delivery, but it was just fell safely over the fielder's head. And after that single, the score moves on to 2. After 3 deliveries in the first over of this grand finale. It'll be Shashank, the left-hander, who'll be facing Sachin. He shuffled across the ground and driven it straight down to Sachin, who kind of misfields it and allows the single. But good start there from Sachin. It's a power play, remember. They have not got off to a great start. It's only 3 runs scored so far of the first 4 deliveries. Again, the change in batting. It's Ratan, the right-handed batsman. The field placements again change. Sachin will be bowling for the 5th time in the first over. He'll be facing bowling to Ratan. Another good smash, but again, it's only clicked. They've taken 2 runs. Oh, wonderful running this. This is sloppy fielding from the fielders in the inner circle. There was never 2 there, but Shashank and Ratan very alert to see that the fielders were taking it very casually there in the inner circle, and they were very sharp in taking those 2 runs. That 2 again causes a field change. The captain not happy with his fielders there in that region, and hence is decided to change the fielders in those key positions. Sachin will be bowling the last ball in this over. Another good shot there, cut shot there in between the 2 fielders. Very good fielding there from the fielder there. Excellent fielding there. With that single, the score moves on to 6 for 0 in the after the first over of the grand finale. DJ. Let it rain over me.
Samir Shanbag to bowl the second over of the innings. A player from Mumbai who has represented Mumbai Paltan's team, Samir Shanbag, very experienced bowler, is going to operate the second over of the innings from the far end, that is from the Arch Pharma Labs Limited end. The meantime, watch Samir Shanbag bounce this one to Ratan Kamath. Goes for a big one, ball is in the air, it could be out of the fielder, is underneath it, and very good catch taken by the wicket keeper, and first wicket has gone down for RCB. So as I mentioned earlier, Samir Shanbag is a very intelligent bowler and he has given the breakthrough here. What a great comeback by Samir Shanbag in this crucial game. Very, very important match to become the champions of this GPL Trophy 2023. So Kodiyal Sports Association are the organizers of this GPL 2023 and the title sponsors are Arch Pharma Labs Limited and the broadcast partner Youth of GSB Worldwide. Very successful bowler. Batsman goes for a sweep shot. Ball wraps onto the pad. Deepak Kamath wanted to go for a sweep shot. Ball hitting the legs of the batsman. There was a loud appeal by the bowler as well as by all the fielders. But umpire says not out, no damage done. Single has been added in the form of leg by. Deepak Kamath is in the non-striker's end now, and the man on strike is Shashank. Left-handed batter, Shashank will take the strike. For this left-handed batter, 4 men on the onside and 5 on the offside. It's a power play over, second power play. First 2 overs will be mandatory power play. Only 2 fielders will be allowed to stand outside the 30-yard circle. I can see 1 fielder in the long on, and there is a fielder in the long off. He goes for a big one, punch the ball to the onside, couple of bounce over the boundary rope for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. Stamattina sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato. Welcome boundary for Royal Challengers of Balambettu from the bat of Shashank. Treated the ball on merits, no risk taken, and there is no need of running for that because the timing was good and the placement was perfect. Excellent cricketing shot there by Shashank. Once again, Shashank is ready to face the bowler Samir Shanbag. Slower delivery, good improvisation in the bowling, intelligent bowling there by the bowler Shashank. Some change in the pace of the ball, and the batsman Shashank played a forward defensive stroke. Ball went straight to the fielder's hand, so no runs resulted. Dot delivery there by Samir. Samir in the previous occasion bowled a 2-shot ball, but after that, good improvisation, no runs resulted. On his way to the left-handed batter. Once again, similar delivery, batsman wanted to go for a big hit, some change in the pace of the ball, change in the direction of the ball, and the batsman beaten comprehensively. The pace deceives the batsman, ball betrays the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. No runs will result. One more dot delivery there by Samir. Samir has conceded 4 runs so far in this over and picked up 1 important wicket also. Again he goes for a big one, ball lofted him over the top. It could be 6 and we'll have to wait. The fielder takes the catch.
And the second wicket has gone down. Shashank is out. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 아름다워 사랑스러워 Thank you, DJ. 그래 너 So excellent catch taken by Sunil, the captain of Malpe United. That's an unbelievable catch. What an amazing catch it was. Almost the ball was going to the boundary ropes, and Sunil takes that catch. Very, very good presence of mind, and you can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. So end of the over, 2 overs gone, 11 runs on the scoreboard for the loss of 2 wickets RCB. It's Gautam who's going to bowl the third over for the Malpe United. We have seen him bowl 2 overs in every match before this. And in the semi-finals, it was his bowling which turned the match in favour of the Malpe United. So he's right arm fast. He'll be bowling around. He'll be bowling over the wicket to Deepak Kamath. Again on the pads, but the batsman just clips it down to the leg side for a single. And good shot there by the batsman. With that single, the score moves on to 12. It is not the expected start for the Royal Challengers Balambettu. They wanted to make good use of the power play. Only 10 runs scored rather, of 2 overs. Here's Gautam again, straight to the fielder. There'll be a chance for run out. Direct hit was attempted by the fielder, but the bowler should have come back and collected it, the throw. But he didn't do that so, and the fielder missed the direct hit, and the end result is a single. With that single, the score moves on to 13. For the loss of 2 wickets, Gautam really doing well with his pace and change of pace. In fact, he'll be bowling to Deepak Kamath now. Good shot there again. Deepak again clipping it to the leg side like how we did in the first ball of this over. So score moves on to 14. They're only dealing with singles now at the moment. The Malpe United will be pleased with the start which they've got. They've picked up 2 very important wickets of the RCB, and now only giving up singles. Another good pull shot. That's up in the air, straight to the fielder. That's a big wicket of Krishna Kamath. He has to depart now. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮನೋಹರ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. Thank you, DJ. It's the new batsman Ashwin Kamath who comes to the crease at the fall of that wicket. It's been quite a slow start from the RCB. It's not what they really wanted. 14 for 3 after 2.4 overs is really not the expected start you want in the final of the tournament. Well, you never know what can happen in the next 4 overs.
Hence, it's Gautam Pai who's going to bowl his fifth delivery to Ashwin Kamath. Good short delivery there, and the batsman is beaten completely. And again, a dot delivery. Gautam has bowled a wonderful over so far. He's only given away 3 runs and picked up an all-important wicket. He'll be bowling the last time in this over. Scores 14 for 3 after 2.5 overs. An attempt for a reverse sweep, and he's put it over the fielder there in the inner circle, and they've comfortably taken 2 runs on that occasion. So, with that double, score moves on to 16 for the loss of 3 wickets after 3 overs. Suresh sir, what do you think of the start that the RCB have done after electing to bat first? Well, Amit, after winning the toss, Deepak Kamath, the captain of Royal Challengers Bangalore, decided to bat first. But their openers, they lost their vital wicket early in their innings. Now they can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact. What they should do is just work the balls into the gap, pick up single to keep the scoreboard moving, keep rotate the strike, and that's what they need to do now. And whenever they get some loose deliveries or full toss deliveries, only then they will have to look for big hits. Let's see what strategy the 2 batters will adopt now. Deepak Kamath is still there. He's the main weapon for RCB, and he has to play his natural game now. He's a good timer of the ball, one of the hard hitter of the ball. He can smash the ball all around the ground. Meanwhile, he is ready to take the strike, and the bowler is also ready to bowl the first ball of the 4th over from the Arch Pharma Labs Limited end. So electrifying atmosphere here today at Sahyadri College Ground. Crowd from GSB community have gathered here to witness this big final, mega final of GPL 2023. Crashing drive to the offside, tremendous shot over the extra cover, lovely cover drive, handsome looking cover drive by Deepak, but Deepak will have to satisfy with only a single here because the fielder was very quick. He comes across and collects the ball, and before the fielder picks up the ball, there is ample time for Deepak to complete a single, but there was no possibility of going for the second run. So Deepak gets only a single, and that single will bring another right-handed batter on strike now. Ashwin Kamath played elegantly to the onside, mix up there, huge mix up. Fielder collects the ball, but the throw was not good enough. Wideish throw. Wicketkeeper was not able to receive the throw, collect the throw properly because the throw was not accurate. As a result, the batsman survives here. Very, very lucky indeed. What a huge mix up there. Comedy of error. The batsman was rushing towards the danger end, but unfortunately the throw was not accurate. As a result, the batsman survives here, and they get a single here. Score moves on to 18 with 3 wickets down. Already 3 wickets have fallen for RCB team. Slower delivery, ball takes the leading edge of the bat. I think the wicketkeeper was not able to carry it. Once again, big reprieve for Deepak Kamath. The ball takes the outer edge of the bat, and it was going directly to the wicketkeeper. Wicketkeeper tried his best, diving to his left, tried to take that catch, but unfortunately, ball slipped away from his hands, and the batsman survives. Similar delivery, this time batsman steers it down to third man region, angling the face of the bat. He just realized that there is no slip, so cuts it off down to third man. The fielder from the third man area comes across and cracks the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single. Samir Shanbag is the bowler. This is the second over of his spell. Already he has conceded 7 runs so far, and he has picked up 2 important wickets, not to forget that. Samir Shanbag balls. Batsman played a forward defensive stroke, gently pushing the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single. Before the fielder corrects the ball, they get a single here.
One more run has been added to the scoreboard here. These two batters are trying to build a good foundation for the rest of the team. They are building a very good platform here and they need a partnership now. And as far as Malpe United team is concerned, they need to break this partnership in order to come back into this game. Let us see whether the bowler will be able to give the required breakthrough here. Samir Shanbag for the last time in this over. Basically a bowler from Mumbai is playing for Malpe United now. Slower delivery, very intelligent bowling there, clever bowling there by Samir. So only single resulted, so single has been added to the total. Samir has completed his quota of 2 overs, no maiden, 9 runs and 2 wickets. What a economical bowling figures from Samir Shanbag. So end of the over, 4 overs gone, 21 on the board for the loss of 3 wickets. Royal Challengers of Belambettu playing against Team United Malpe. Samina mina, waka waka, Samina mina, sakalewa, anawa, Samina mina, waka waka, Samina mina, sakalewa. This time for Africa, cheering it all time, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Thank you, DJ. So meanwhile, I have got Mr. Ajay Raj is with me in the commentary box, who is a national level cricket commentator in Hindi language. So very warm welcome to you, sir. So I would like to recognize your presence and we heartily welcome you on behalf of Kodia Sports Association for this mega final of Arch Pharma Labs GPL Trophy 2023. So very soon you will hear the voice of Mr. Ajay Raj, who is a professional, very popular cricket commentator in Karnataka state. So bowler from the Puzalana end, Gautam Pai is the bowler. Second over of his coacher. Full toss, wanted to convert that into full toss. Goes for a sweep shot but not a fully controlled stroke, not from the middle of the bat. The batter will have to satisfy with only a single here. So single has been added to the total of RCB. RCB batters are not going for any unnecessary hits here. That's a good thinking, intelligent cricketer, because they want to rotate the strike and they want to build a good foundation for the rest of their team here. Back to the bowler. Good piece of fielding of his own bowling. Followed through and picks up the ball. Smart piece of fielding there by the bowler Gautam Pai. And he collects it and threw it very quickly to the wicketkeeper. So no runs resulted here. Dot delivery there by Gautam Pai. Runs on the scoreboard is 23 for the loss of 3 wickets. And you are watching Arch Pharma Labs cricket tournament. Played elegantly onto the offside. There is a protection. So only single resulted here. One more run to Deepak Kamat's account. Deepak is in the non-strikers end now. Deepak is the captain of Royal Challengers Balambettu, a team from Kerala border. For the first time, they have participated in this particular tournament, that is Royal Challenge Balambettu, and they are playing against a team from Seashore, that is United Malpe. Goes for a reverse shot, ball is in the air, there is a fielder, but ball falling into the no man's land. Ball has fallen down to the vacant region, so no damage done for the batsman. Couple of runs have been added to the total here. Batsman, I beg your pardon, only single has been added. So batsman wanted to go for a reverse shot, but not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. So only single has been added to the total, which takes their full score to 25 now. 25 for the loss of 3 wickets. Full toss. Gently flicks the ball to the gully region and Deepak gets a single. Deepak is batting on 8 runs after facing 11 balls, and at the same time Ashwin Kamath is on 6
of 6 balls. Runs on the scoreboard is 26 for the loss of 3 wickets. 5 overs gone, 2 more overs to go. Let us see how many more runs they will be able to score in the remaining 2 overs. Meantime, it is time for us to change the commentary language. So I would like to hand over the microphone to Mr. Ajay Raj to proceed the further commentary in our national language, that will be in Hindi. Thank you very much. Hello, check. Hello, check. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जीपीएल उत्सव में सारे दर्शकों का हृदय से स्वागत है। उजरेचे संध्या फ्रेशाचे श्री राजेश पै हन्यासचे देकोर्नु वेदिके वेरेनु बयस्कोमणमि निम्गुन गेतासच। थैंक यू। तो इस प्रकार दोबारा स्वागत है सारे दर्शकों का। और इस मैच में इस वक्त जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ रॉयल चैलेंजर्स टॉस जीतने के पश्चात दूर वाले छोर से ये गेंद विनायक की गेंद ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया। स्ट्रोक के पीछे ज्यादा पावर नहीं लगा पाए और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर एक तरह से गेंद के ऊपर आ गए। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। क्या शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। रात के 10 बज चुके हैं और दर्शकों की तादाद इतनी ज्यादा है मानो कोई महोत्सव चल रहा हो। और दूधिया रोशनी से बिल्कुल नहाता हुआ ये मैदान, फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी से, सुनहरी रोशनी से दर्शकों की तादाद एक तरह से कहना चाहिए कि सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर दूर वाले छोर से जो कि गेंदबाज तैयार होने और स्ट्राइक एंड पर कैमरामैन जो कि कैप्चर कर रहे हैं हर उस दृश्य को जो कि इस जीपीएल महोत्सव का एक अविस्मरणीय क्षण जिसे कहते हैं। दर्शक बड़े खुश हैं और दूर वाले छोर से ये गेंद ऑन विकेट और बैकफुट पर ये फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव कर दिया। फील्डर की दिशा में गई जो कवर में शॉट में मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया गया। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 28 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 28 for 3, जबकि 6वां ओवर प्रगति पर है। विनायक आक्रमण पर है। अब तक 2 ओवर हालांकि 2 विकेट्स 2 रन वो खर्च कर चुके हैं और 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्ट्राइक एंड पर दीपक कामत क्या योजना बनाते हैं देखने वाली बात होगी। जबकि विनायक भाई उस छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। It's Vinayak Pai who's going to bowl the 3rd delivery of this over. He's shuffled across the wicket but failed to make any connection there. So that's another dot ball in this over. It's a 7 overs match, so another 9 more deliveries to go in this innings. It's only 28 runs scored so far of 5.3. Hence the batting team needs to get those big hits now. थैंक यू अमित, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। दूर वाले छोर से इनफील्ड के ऊपर से गेंद को उछाल दिया, लॉफ्ट कर दिया। कवर के दिशा में फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं। जब तक वो गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो कर पाए बैट्समैन के पास समय कि वो कुछ रनों को बटोर लें। शानदार 2 रन बटोर लिए गए और रॉयल चैलेंजर्स बालमबेट्टू जो कि एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है अपने टीम को टॉस जीतकर पहले इसी प्रयास में कि एक जबरदस्त लक्ष्य बनाकर विपक्षी टीम पर वो दबाव बनाए, प्रेशर बनाए। मलपे यूनाइटेड के गेंदबाज इस प्रयास में लगे हुए हैं कि विकेटों को वो प्राप्त करें। उस छोर से वो विकेट, ये गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, चारों खाने चित हो गए। यू मिस मी आई हिट यू, बोल्ड हो गए। डीजे भारत बीडीचे सुब्राय पै अण्ण आमगे टस तानी दैकोर्नु वेदिके वेरियो बैस्कोमणु निम्गुन गेतस वेदिके वेरियो का दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। थैंक यू डीजे, क्या बात है। और
शानदार नृत्य देखने को मिल रहा है। चीयर बेबीज हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है। इस क्रिकेट श्रृंखला को 4 चांद लगाने के लिए त्रिमूर्तियों ने क्या जबरदस्त प्रयास किया है। आपको वो सब कुछ देखने को मिला जो किसी कर्नाटक में, किसी क्रिकेट श्रृंखला में, किसी ऐसे एंटरटेनमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक ही पैकेज में इतना सारा धमाका है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और इसीलिए जीपीएल में हर साल नया देखने के लिए दर्शकों का हुजूम, उनकी संख्या, उनकी तादाद बढ़ती जाती है। दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, शानदार गेंदबाजी का प्रयास उनका, जबकि रॉयल चैलेंजर्स केरला बॉर्डर से आती है। इस साल में एक तरह से कहा जाए तो पहला प्रयास, और पहले प्रयास में फाइनल तक पहुंच गए। स्टंप्स के दिशा में आती हुई गेंद, जिसको थोड़ा सा हल्के हाथ से खेलने का प्रयास, कवर की दिशा में फील्डर ने थोड़ा सा डाइव लगा कर गेंद को रोकने का प्रयास किया। इस प्रयास में विफल हो गए और 1 रन के साथ ही रन बढ़कर 31 पर 4 विकेटों के नुकसान पर, जबकि यह 6वां ओवर समाप्त हो चुका है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स, स्कोर इज ऑन 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अश्विन कामत 7 के व्यक्तिगत योग पर खेल रहे हैं। कैमरामैन दोबारा एक शानदार दृश्य को कैप्चर कर रहा है। एक बहुत नन्हा प्यारा सा बच्चा स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, क्या शानदार दृश्य है। थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि डीजे शानदार धुन बजा रहे हैं, चीयर बेबीज इंतजार कर रहे हैं कि वो उनको अवसर मिले कि वो अपना नृत्य दिखाएं, और इस प्रयास में उनका शानदार दृश्य। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीधर बेंडो जो कि इस वक्त स्ट्राइक एंड पर, लंबे कदकाठी वाली ये गेंद, पटकी हुई गेंद थी, गेंद को बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ही अद्भुत स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर आकर गेंद को समेट चुके हैं। शानदार फील्डिंग है, और इस 1 रन के साथ रनों का लेखा जोखा आपको बता दें, कुल मिलाकर 32 रन बच चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। श्रीधर बेंडो जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाज माने जाते हैं, सिरसी सुपर किंग्स के बहुत ही एमसीएल में खेल चुके हैं। क्या बात है, गौरव की बात है, हमारी शान की बात है। मैन ऑफ द सीरीज का हकदार भी उन्होंने पाया है, और बाइसिकल जो कि उस वक्त मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार रखा गया था, तो इसीलिए एक तरह से इस क्रिकेट श्रृंखला की गरिमा को उन्होंने बढ़ाया। श्रीधर मेंडन, और इस क्रिकेट श्रृंखला में क्या बात है, सुरेश जी हमको अलग अलग बातों से वाकिफ करा रहे हैं। इस क्रिकेट श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट प्राप्त करने वाले श्रीधर मेंडो हैं, क्या बात है। इस छोर पर वो नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं। ओवर द विकेट, राउंड विकेट माफ कीजिएगा, ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेलने का प्रयास, और विकेट कीपर ने गेंद को उठा लिया, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर चुके हैं। आपाधापी में, आनंद फानन में 1 रन बटोर लिया गया है, और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 33 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। क्या जबरदस्त दृश्य देखने को मिल रहा है। आकाश अंधेरों में डूबा हुआ है, दूर दूर टिमटिमाने वाले लाइट्स, ऐसा लग रहा है कि जुगनू टिमटिमा रहे हैं। एलईडी के बड़े स्क्रीन दिखाई पड़ रहे हैं, दर्शकों का हुजूम, उनकी संख्या बता रही है कि क्या ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला। ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेल दिया, हवा में फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने कैच कर लिया श्रीधर मेंडो का, और ये लंबे कदकाठी वाला बल्लेबाज जो निश्चित तौर पर खतरनाक साबित हो सकता था, डकआउट की दिशा में अपने कदमों को ले जा रहा है। ಹಲೋ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವರಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಹಾಕ ಪೈಸೇಲ್ಸ್ ಸುಜುಕಿ ದೊಕನು ಸುಜುಕಿ ಗಾಡಿ ಮೆಳ್ತಾ या वर्ष सुजुकी अविनेस मेळता स आमगे लोटो गणपती पै मामा सची दय करून तुम्ही वेदिकेवर येऊन बैसका, तशीची रत्नाकर पै मामा असल्यावर तुम्ही दय करून वेदिकेवर येऊ का, तशीची अरुण पै हानी असल्यारी दय करून तुम्ही वेदिकेवर येऊन बैसका म्हणून मी निमून घेता सची अरुण पै याची वेदिकेवेरी
तो आइए मैच में दोबारा आते हैं लाइव एक्शन की तरफ। 33 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और श्रीधर मेंडो आउट होकर पवेलियन लौट गए। उनके स्थान पर नए बैट्समैन का आगमन, जबकि 18 नंबर के जर्सी में गेंदबाज वरुण किनी आक्रमण पर तैयार है। राउंड विकेट उनकी गेंद हमसे दूर जाते हुए फुजल ने एंड से इस बार बैट्समैन ने गेंद को धीरे से हल्के हाथ से पुश पर कर दिया, ज्यादा जोखिम नहीं उठाया। मेरिट पर खेलना चाहते हैं, जानते हैं कि शाम के पश्चात पिच का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। धीमा खेल खेलती है, स्पॉन्जी खेलती है, गेंद रुक कर आती है, बल्ले के ऊपर टाइम से गेंद नहीं आती है और इस वजह से बैट्समैन को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ रहा है। और अगर मेरिट पर खेलें, सिंगल्स को बटोरें तो बात बन सकती है। रन 34 पर 5 विकेटों के नुकसान पर फुजुल एंड से राउंड विकेट उल्टे हाथ से प्लेसमेंट के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन फील्डर वहां पर भी दिखाई पड़े। उन्होंने गेंद को उठा लिया और अवसर था, शायद कैच का हो सकता था, लेकिन कैच मिले ना मिले उस शानदार फील्डिंग के लिए सराहना करनी होगी, क्योंकि अगर उनके हाथ से गेंद छूट जाती तो निश्चित तौर पर ट्रैवल करते हुए बाउंड्री लाइन की दिशा में जा सकती थी। 35 रन 5 विकेटों के नुकसान पर संघर्ष अभी जारी है। रॉयल चैलेंजर्स जो कि टॉस जीतने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करता हुआ केरला बॉर्डर से यह टीम आई है। दोनों टीमों को पहले तो सलाम कहते हैं। पहले राउंड विकेट, ये गेंद, इस गेंद पर आते हैं, गेंद को पुल कर दिया ऑन साइड की दिशा में, फील्डर आ चुके हैं गेंद के ऊपर मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन चुरा लिया। दूसरे रन का रास्ता नहीं बनेगा, विकेट कीपर ने गेंद को कैदर कर लिया, गिल्लियां उड़ा दी। इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और चीयर बेबीज के लिए अभी अवसर मिलेगा। डीजे को हम जरूर कहेंगे कि वो शानदार धुन बजाएं, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त विष्णु भट्ट जी दिखाई पड़ रहे हैं, मलपे यूनाइटेड के सपोर्टर हैं, शानदार नृत्य करने के लिए जाने जाते हैं। एक तरह से माइकल जैक्सन उनको कहा जाता है, और जहां कहीं पर भाई शानदार बड़ी क्रिकेट श्रृंखला होती है, वो अपना योगदान नृत्य के जरिए देते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस मैच में डीजे से थोड़ा सा अनुरोध करते हैं कि वो थोड़ा सा धुन को रोकें। मलपे यूनाइटेड रॉयल चैलेंजर्स के बीच में यह संघर्ष, सबसे पहले सलाम इसलिए कहा क्योंकि मलपे यूनाइटेड और रॉयल चैलेंजर्स ने इस पूरी श्रृंखला में, हालांकि 7 सालों से एक क्रिकेट श्रृंखला बन रही है, पहली बार फाइनल तक का रास्ता उन्होंने बना लिया है। क्या बात है, शानदार प्रयास है उनका। बड़ी बड़ी टीमों ने हिस्सा लिया, यहां तक कि मुंबई पल्टन्स जो 2 बार विजेता रह चुके हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया। लेकिन इसे कहते हैं कि किस्मत का खेल, किस्मत और स्किल अगर आपके साथ हो, टैलेंट आपके साथ हो, आपका विश्वास अटल हो, आत्मविश्वास अटल हो, जज्बा हो जीतने का, तो कहीं ना कहीं राह बना ली जाती है। मलपे यूनाइटेड रॉयल चैलेंजर्स ने, जो कि पहली बार श्रृंखला में हिस्सा ले रहे हैं और फाइनल तक का रास्ता उन्होंने पूरा कर लिया। फाइनल में बिल्कुल वो तैयार है, सज्ज है, मुस्तैद है एक दूसरे से भिड़ने के लिए, टकराने के लिए। और ऐसे में दोबारा खेल शुरू होने जा रहा है। दोनों बैट्समैनों का इंतजार, इस वक्त सारे फील्डर्स मैदान पर उतर चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स के गेंदबाज, क्षेत्ररक्षक, कप्तान सारे मैदान पर उतर चुके हैं। मुझे लगता है कि समय है कुछ 1-2 ओवर्स मेरे साथीदार विवरण सुनाएं, ताकि मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊं, कुछ और शब्दों का मेरा पिटारा खोलकर आपके सामने मनोरंजन के लिए कुछ नई मालाओं को तैयार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉपिंग करा रोज ये तंग करती है मेरी वाली टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग करती है ये मेरी वाली टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग टिंग टांग करती है।
Yes, thank you, DJ. We are all set for the second innings of this mega final between Malpe United and RCB. The RCB have batted first and scored 36 runs of the 7 overs. Hence the target is 37 runs. 37 is the target in 7 overs for the Malpe United. Sachin and Varun are the opening batsmen for the Malpe United, and it will be Deepak Kamath who will be bowling the first over for the RCB. And here we are going to begin. First ball. Straight up in the air, will this be taken? It's in between 3 fielders, and they have taken a wonderful catch. That's the first wicket of the first delivery. Deepak, who's taken the first wicket of the first delivery, he'll be bowling to Rohan now. Again, a very good delivery. He could just defend it back to the bowler. So, if we thought that this would be a cakewalk for the Malpe United, well, Deepak did not think so. He picked up the big wicket on the very first delivery. Again, Deepak bowling to Rohan, who just taps it down on the offside, picks up a single. With that, the Malpe United have opened their innings for the day. So it's 1 for 1 after 3 deliveries of the first over. So viewers who just joined us, this is the mega finale of the GPL 2023. The winner of this match will lift the trophy, which is displayed on the right side of the commentator's desk. It's a beautiful trophy, and it's shining in the night sky. Deepak Kamath coming for the 4th time in this over. He'll be bowling to Varun Kini, the left-hander, who will be facing his first delivery of this match. Again, a small start, and then he just taps it to the fielder on the offside. So with that single, the score moves on to 2. And quite slow start in the power play for the Malpe United. They did not expect to lose a wicket in the very first delivery. Hello, check. Malpe United ache captain ana 6 marlari 5000 रुपये दित मला संतोष सालियान मल्पे हनी त्याच्यावनो एक अनाउन्समेंट कॅप्टन आणि 6 मारलारी 5000 रुपये. Again, and just a tap on the offside. Again, these batsmen just want to pick up a single and keep the scoreboard ticking. It's a no ball called from the umpire. It's overstepped there has Deepak. You really don't want to give these extras to the batting team when it's the final of the match, the final of the tournament. Again, he missed the free hit completely.
Varun would be really upset with himself that he didn't do much of that free hit. Well, Deepak Kamath has to be lucky because the batsman missed that delivery completely. So last time, Deepak, full toss, straight driven down to mid-off, and it's a single. With that single, score moves on to 5 for 1 after the end of the first over. So thank you, Amit Pai. Welcome back once again to GPL Utsav 2023. We are now watching the final match between Royal Challengers of Malpe 2 versus United Malpe. 37 is the victory target for Team United Malpe to win this match against RCB. This is not a very difficult target for the team because they have got a batting lineup. Only thing is they have lost their first wicket early in their innings. Now these two batters will have to take the full responsibility of this game on their shoulder. Ball is in the hands of the bowler Sridhar Mendo, a player from Shirsi town who has represented MCL and had got the Man of the Series award. Here is an announcement. A 6-year-old lady, a girl, Bhavyata Sheth is missing. So, konaka email na mun jalari anga commentary box la jo main stage lagi eveta white color dress galala Bhavyata Sheth 6 years old girl miss jalla. Okay, blue jeans, white top. Bhavyata Sheth manalek server actually miss jalla. So the bowler Sridhar Mendo, as I mentioned earlier, is a topmost bowler who has got most number of wickets in this tournament, and he's one of the contender for best bowler award, and he's now on his way to the right-handed batter. Man on strike is Rohan Nayak. Varun Kini is at the non-striker bench. Ball pitching right in the block hole. There could be a chance of run out. If it's a direct hit, the batsman could have been in trouble. Direct hits are always dangerous. Fortunately, that has not happened, and the batsman survives here. Single has been added to the total of Malpe United team, which takes their full score to 7 now. 7 for the loss of 1 wicket, and we are in the second over of the innings. 37 is the victory target. Crashing drive steers it down to third man region, angling the pace of the bat, but only single will result here. These two batters are trying to build a good foundation for the rest of the team. They need to build a good platform here because they can't afford to lose any more wickets. They've lost their first wicket early in the innings, so they should not lose any more wickets. They must keep their wicket intact. What they should do is just work the balls into the gaps, pick up singles and doubles, and whenever they get some loose delivery, there could be a chance of run out. Once again, direct hit has not happened, and the batsman survives here. That was a very, very risky run. The batsman was rushing toward the danger end. Sridhar Mendo is not happy with that. It was a golden opportunity for them, but unfortunately, direct hit has not happened. Batsman survives, very, very lucky indeed. Runs on the scoreboard, moves on to 9. Two more balls to go of this over. Sridhar Mendo from the Arch Pharma Labs end. Again, gently pushing the ball to the offside, just cuts it off. Down to third man. The fielder from the third man area comes across and collects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single.
another single has been added to the scorecard of their team, and that single will take their full score to 10. 10 with 1 wicket down. Last ball to go. Sridhar has conceded 5 runs so far in this over. For the last time he bowls. Attempted for a reverse shot. Ball is in the air. It could be a boundary. We'll have to wait and see. Long chase for the fielder. And at the last moment, the fielder was able to stop that ball. Otherwise, the ball would have been crossed the boundary ropes here. Very good piece of fielding. Brilliant piece of fielding. He has saved a couple of runs for his team. So 3 runs have been added. At the same time, aggressive running between the wicket here. Good understanding between Varun Kini and Rohan Nayak. So 3 more runs have been added to the total. 2 overs gone. 13 on the board for Team United Malpe with 1 wicket down. भव्या शेट म्हणाले एक 6 वर्साचेल्ली मिस जाल्या. व्हाईट टॉप तशींची ब्लू जीन्स घालेल्या भव्या शेट 6 वर्साचेल्ली मिस जालेले आसा. देखोर न्हू तांगेले पेरंट्सांक वेट करता आसा ती कोणाक मेळ्ळ्या म्हण जाल्यार हांगा आमगेल्या ऑर्गनायजर्साक संपर्क करूयात. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. सारे दर्शकों का दोबारा स्वागत है और 13 रन से 1 विकेट के नुकसान पर सुरेश भट्ट जी का स्वागत है. और मुझे लगता है कि दोबारा वो थोड़ा सा मिश्रित विवरण जिसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी और जीएसपी की मातृभाषा कोंकणी में थोड़ा सा शब्दों का लेन देन करते हैं ताकि दर्शकों का थोड़ा सा प्रयास करें कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट उनको मिल जाए, कुछ अलग स्वाद. ये गेंद ऑन साइड की दिशा में लपेट कर गेंद को खेल दिया हवा में. कैच हो सकता है, कैच बन गया. फील्डर ने घुटनों को झुकाकर गेंद को अपने झोली में डाल दिया. इसी के साथ एक और विकेट. थैंक यू डीजे चेयर बेबीज. बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भट्ट जी. आइए, समय है कि थोड़ा सा शब्दों का लेन देन करें और एक एक मुद्दे पर धीरे धीरे से बात करते हैं. शानदार कैच लपक लिया गया बहुत खूबसूरती के साथ. और इससे पहले कि माइक को थोड़ा सा साझा करें, जिस तरह से दीपक गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं, इस गेंद पर आते हैं. फुजल होना गेंद एंड से ये गेंद ओवर द विकेट ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास मिस कर गया. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर दिया, अंपायर कहने के वाइड. सबसे पहले सुरेश जी, मुझे लगा कि एक एक मुद्दों से बात शुरू करते हैं. क्रिकेट श्रृंखला जो कि 7 साल से बनाई जा रही है, इस साल में कुछ और बढ़ोतरी हुई है, अगर आप याद करें तो बिल्कुल बताइएगा. सो जीपीएल वॉच करता सक्कड व्यूवर्सांक वापस एक पटी वेलकम बैक. आर्च फार्मा लॅब्स लिमिटेड जीपीएल ट्रॉफी 2023 च्या मेगा फायनल मॅच मल्पे युनायटेड आणि रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट्टू या दोन्ही टीमांमध्ये जत्तरस 37 टार्गेट मेळ्ळा मल्पे युनायटेडाक. अँड ॲट द मोमेंट तांगेल स्कोर जाल्ला 15. 2 विकेट कळवून घेतला. पळोवया वरल्याला या दोगजण बॅट्समॅन कशी खेळतात म्हणून. दीपक कामत बॉलिंग तयार झाला. या पटी लायक एक ड्रायव्ह क्रॅशिंग ड्रायव्ह ऑफ साइड आणतो ज्याला ते एक प्रोटेक्शन असतं. तस ज्यावर खाली 1 रनानं संतुष्ट जावका. सो बॅट्समॅन मेळ्ळा 1 रन. अजी वटूची तांगेल्या टीमाचा स्कोर झाला 16 for the loss of 2 wickets. वापस बॉल दीपक हातास. दीपक फ्रॉम दी फुजलान एंड बॉल घालतास. खंडित जावन वाईट जावका. खंचे डाऊट ना. लेग स्टंप करून मस्त बाहेर गेलेला. अजय जी म्हाका दिसतास या संदर्भात खंडित जावन वाईट दिवचे अजय. इथे मला ईच अँड एव्हरी रन इम्पॉर्टंट जावन असता. वाईट गल्ली म्हणजे त्या
रन्स ऐड जाता तितले ने अशी एक एक्स्ट्रा बॉल एगल का जाता अतिरिक्त में गेंद भी मिल जाते हैं और बैट्समैन का हौसला भी बढ़ता है। ये गेंद इस बार थोड़ा सा ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेलने का प्रयास किया कदमों के इशारे से और प्लेस नहीं कर पाए। सुरेश भट्ट जी, मुझे लगता है कि अतिरिक्त रन निश्चित तौर पर बहुत गफलत पैदा करती है। अतिरिक्त रन मिल जाते हैं, अतिरिक्त गेंद मिल जाता है, बैट्समैन का थोड़ा सा हौसला बढ़ता है क्योंकि एक एक रन से निश्चित तौर पर घट बढ़ता है। खंडित जावन अजय दी बॉलरांना डायरेक्ट आणि ॲक्युरेसी का मस्त इम्पॉर्टन्स दिवका जाता, बॅट्समॅनाक बांधून घालका जाता। त्या संदर्भात हांगा दीपक त्यांचे प्रयत्न करतस जाल्यार लास्ट ओकेजनान तो मिस जाल्लो, मस्त भायर घालला ताणें, तशें जावन एक एक्स्ट्रा रन मेळ्ळा। तशींची आतां लेफ्ट हँडर बॅटर स्ट्रायकर आयला, बॉल फेस करको रेडी जाला। दीपक कामत ताजे मध्ये फिल्डिंगान थोडे चेंजेस करतस, लेफ्ट हँडराक 4-5 फील्डर्स ऑफ साइड आसात, तशींची 4 फील्डर्स ऑन साइड तो एक लॉंग ऑन आस, तशींची एक डीप मिड विकेट, एक सिली मिड ऑन, तशींची एक डीप स्क्वायर लेग। अजिबात लायक एक क्रॅशिंग ड्राइव्ह करचे प्रयत्न केला, बट बॅट आणि बॉलामध्ये तितले एक लायक संपर्क नाशिल्ले, कनेक्शन तितले लायक नाशिल्ले, टायमिंग नाशिल्ले। तशें जावन एक रन प्राप्ती जातास, एक रन ऍड जाल्ल्या स्कोर बोर्डान तो वट्ट स्कोर दाखयतास 19 विथ 2 विकेट्स डावन। अजय जी, ती तुमगे प्रेडिक्शन कशी, खंयची टीम या मॅच विन जावच्या पुरो? दोन्ही टीमाक म्हाका दिसता दोन्ही टीमाक चान्सेस इक्वल आस, इथे म्हळ्यार दोन्ही टीमांतू लायक प्लेयर्स आसा ती। सो पळोवया कोण या मॅच विन जावन ह्या पटीच्या GPL 2020 ट्रॉफी उबारता म्हणून। जी हाँ, 50-50 चांसेस मुझे भी लग रहे हैं सूरज जी, जिस तरह से इस वक्त खेल चल रहा है। और 38 रनों का लक्ष्य अगर गेंदों को देखा जाए, 42 गेंदों में 38 रनों को बनाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बैट्समैन प्रयास यही कर रहे हैं कि स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल्स को बटोरें और इस प्रयास में फ्लो भी मिल जाता है। और मुझे लगता है कि आने वाले ओवर्स में पता लगेगा कि बैट्समैन ने क्या योजना बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ सिंगल्स पे वो ध्यान दे रहे हैं, मेरिट पर खेल खेल रहे हैं। और दूसरी ओर देखा जाए रॉयल चैलेंजर्स इस वक्त विकेटों की सख्त तलाश कर रहा है, 2 विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं। दूर वाले छोर से ये गेंद राउंड विकेट और कैच का मौका है, जबरदस्त कैच का मौका और बल्ले को महीम सा स्पर्श करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई। एक बड़ा विकेट मिल चुका है, बैट्समैन आउट हो गए। थैंक यू डीजे चेयर बेबीज को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी गेंद और यूं ही नहीं कहा जाता चीयर्स मेंडो को। श्रीधर मेंडो जो कि शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। वापस आम्ही सांगते असं ती भव्या शेट म्हणाले एक 6 वर्षाचं चानी चिल्ली हुडकून गेला, कोणा मेळ्ळ्यार हांगा संपर्क करका। व्हाईट टॉप ब्लू कलर जीन्स घालेल्या भव्या शेट। ओके, थैंक यू भव्या इज फाउंड। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी खुशी की बात है। और जो दिल में दबाव, प्रेशर, जो दुख, जो तनाव महसूस होता है जब अपने जिगर का टुकड़ा निकल जाता है और मिल गया, ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर वाले छोर से श्रीधर मेंडो तैयार हुए, आक्रमण पर उनके गेंद इस बार हल्के हाथ से गेंद को धीरे से पुश पर कर दिया और 1 रन चुराने में सफल रहे। वो गेंद सुरेश भट्ट जी आते हैं, हाई आर्म एक्शन है। श्रीधर मेंडो को यूं ही नहीं कहा जाता है कि वो शानदार गेंदबाज हैं, बहुत लंबे कदकाठी वाले हैं। हाई आर्म एक्शन से गेंद आती है और फिर उसमें थोड़ा सा मिश्रण होता है। बैट्समैन पिछले गेंद पर गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का सिरा दे बैठे, विकेट कीपर ने कैच कर लिया। खंडित जावन अजय राजी तांगेल टीमाचे एक बॉलिंग ब्रह्मास्त्र म्हणून म्हणत श्रीधर मेंडो बेसिकली शिर्सीचे एक प्लेयर, शिर्सी सुपर किंग्स म्हणाल टीमान तो खेळचीत असल प्लेयर। मुंबईच्या MCL मुंबई चॅम्पियन्स लीगान तो मॅन ऑफ द सिरीज घेतील एक प्लेयर। आता बॉलिंग घालतस या पटी लायक एक बॉल बट लेग स्टंप कोण चिक्के बाहेर गेल्ले, तशें जावन खंडित जावन अंपायर विराजान वाईड म्हणून म्हणला। खंयचे आर्ग्युमेंट ना बॉलराला, कित्याक म्हळ्यार ताका सिच्युएशन गोतस लेग स्टंपात कोण भायर गेल्यार अंपायर आसता खंडित जावन वाईड म्हणून दिता ती। हांव तावणी सांगेल म्हणजे अजय राजी प्रत्येक रन्स इम्पॉर्टंट जावन आसता, तशें जावन बॉलर्सान परफेक्टली स्ट्रेट टू द विकेट घालपाक जाता। विकेट टू विकेट बॉलिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यही बात इस वक्त चल रही है। श्रीधर मेंडो इसी काम में लगे हुए हैं, ऑन साइड की दिशा में कदमों का इस्तेमाल किया, खूबसूरती के साथ गेंद को फ्लिक कर दिया है। कदमों और कलाइयों का सही इस्तेमाल इसे कहते हैं। खूबसूरती के साथ गेंद को ऑन साइड की दिशा में फ्लिक किया बैट्समैन ने।
1 रन चुरा चुके हैं। और श्रीधर मेंडो सूरज जी यही काम कर रहे हैं, वो सटीक लाइन और लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर उदाहरण के तौर पर आपको कहें तो बनिया जिस तरह से अपने सामान को नाप तोल कर बेचता है, उस अंदाज में बिल्कुल नाप तोल कर गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछली गेंद जो एक तरह से एंगल डिलीवरी थी, उस छोर से गेंद राउंड विकेट, जैसे ही लेफ्ट हैंड आ गए बैट्समैन गेंदबाज ने थोड़ा सा अपना गार्ड बदलते हुए लेफ्ट हैंड राउंड विकेट, माफ कीजिएगा, गेंद की इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से बैट्समैन ने पुश किया। रन लेने का अवसर नहीं, 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। खंडित जाऊन अजय राजे एक खुशी विचार तांक कसं म्हणणारे श्रीधर मेंडो तसं एक बॉलिंग ब्रह्मास्त्र असं म्हणून गेलं ते खंडित काही तांगेल टीमाक एक प्लस पॉइंट जावन आसता। अजय मध्ये लायक एक क्रॅशिंग ड्राइव्ह बॉल वाऱ्यार आशिल्ले, कॅच चान्सेस आशिल्ले बट कॅच ड्रॉप जाला। कैचेस विंस द मैचेस, कहावत है पकड़ो कैच जीतो मैच। और हर एक कैच बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि कैच छूटने के पश्चात कहीं ना कहीं जो धड़कनें बढ़ी थी जिस तरह से मलपे यूनाइटेड की, वो थोड़ी सी राहत की सांस ले रही हैं। और इस वक्त जीत का लक्ष्य 38 रनों का मात्र 23 रन बन चुके हैं। रनों और गेंदों के बीच में जो आंख में चोली खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं दोबारा बदलेगा। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार। अद्भुत जावन आशिल्लें दिसू लायक एक क्रिकेट पळोवच्याक सह्याद्री कॉलेजाची हांवें ग्राउंड कंप्लीट ग्रीन जावन दिसता, लायक एक पिच तशींची लायक कंडिशन्स बॅटर्साक आनी बॉलर्साक। अजयजी क्रिकेटाक एक अनुकूल वातावरण हांगा सृश्टी जाला म्हण म्हणयत कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन आनी प्रेजेंट करता GPL उत्सव 2023 का। इसमें कोई दो राय नहीं है सूरज जी। आइए पहले इस गेंद पर आते हैं, दूर वाले छोर से ये गेंद और श्रीधर की गेंद को कदमों का क्या जबरदस्त और कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल इसे कहते हैं। सुनील बिल्कुल पके हुए उस खिलाड़ी की तरह जो बहुत अनुभव के साथ अपने कदमों का कलाइयों का इस्तेमाल करता है। ऑन साइड की दिशा में फ्लिक किया, 1 रन चुरा चुके हैं। रन बन रहे हैं कुल मिलाकर रन 25 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। तो सह्याद्री का मैदान निश्चित तौर पर जिस तरह से सूरज जी ने कहा क्रिकेट के लिए अनुकूल है। और एक तरह से कहा जाए तो कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन हर साल इसी मैदान का चयन इसी वजह से करता है। और विशेष तौर पर मैंने एक तरह से इसको नाम ही रखा है कि मैंगलोर का ईडन गार्डन है। बिल्कुल हरियाली भरा वातावरण, प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह मैदान। एक छोर पर नदी दिखाई पड़ती है और दूर दूर आपको घने पेड़ देखने को मिलेंगे जो इस वातावरण को चकाचौंध करते हैं। समय है इस वक्त थोड़ा सा विवरण बदलने का। अमित जी को बुलाते हैं, शानदार विवरण करते हैं। हालांकि आज ही उनसे मुलाकात हुई और वो भी GSB समाज से बिलोंग करते हैं और शानदार तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा पॉलिश करना बाकी है, आगे मुझे लगता है कि आने वाले सालों में वो भी एक बिल्कुल शानदार कमेंटेटर के रूप में उभर आएंगे। अमित जी। Yes, thank you. It's 12 more runs required from 18 deliveries now. Sunil Shanay will be facing Ratan Kamath. Hello, check. He is the सर्वर सचेरडू भव्य कई जो ग्राउंड आहे तुमगेले लागी पळयाची कंच मेळा नव यस Yes, it's Ratan चेरडू Kamath. वाले जगरत गेयाची पूरा पेरेंट्स का एक विशेष अनाउंसमेंट है चेरडू वाले देखोरनो जगरत कोण गेयाची। Yes, that's another single which gets added to the score. The score moves on to 26. It's Ratan Kamath who will be bowling the 5th over now. He's already bowled his first delivery. These are very crucial moments of this match. So you can see that he's got most of his fielders inside the inner circle so that they want to restrict those singles for the batting team. That's again a pull and the batsman has missed it completely. That's a dot delivery. There was an appeal but the umpire says there's no nick. And hence a good bowling there from Ratan. He has to contain the batsman because there's only around 11 more runs required for the batting team. So I'm sure they're not going to take any much more risks while scoring that. They only can do it in singles. So they need not attempt those big shots for this moment at least. Again straight to the fielder and wonderful fielding placement set by the captain of the RCB. He's kept a very tight offside field for the left-handed batsman. It's going to be very difficult for him to steal a single there. So he has to smash the ball over the inner circle and try to pick up those runs. Ajay ji. जी हाँ बिल्कुल। आइए इस गेंद पर आते हैं। गेंद को लेकर
रतन तैयार हो रहे हैं, राउंड विकेट उनके गेंद लॉफ्ट कर दिया। काफी देर बाद एक बहुत खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिला है। लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद गिर गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। कमाल का जीपीएल चौका। हॅलो चेक वी क्राफ्ट लकी डिप कुपन तुमगे लगेतस लकी डिपाक 100 रुपये आयलारी घेयाची लायक वॉर्ड्रोप बेड पुरा मेळची तसले एक प्राइजेस यूथ ऑफ GSB री 20 तारीखेक अनाउंस जाता रिजल्ट। वी क्राफ्टाचे बेडरूम सेट वॉर्ड्रोब टेबल पुरा आसा कूपन तुमगे लगे आयलारी घेयाची। थैंक यू किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और 30 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर है, 7 रनों की दरकार है। क्या जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है और हौसला बढ़ाते हैं दोनों टीमों का। हालांकि इस वक्त मजबूत पकड़ बना चुकी है मलपे यूनाइटेड। पहली बार श्रृंखला में हिस्सा और फाइनल तक का रास्ता और जीत की दहलीज पर। ऑनसाइड की दिशा में गेंद को पुल कर दिया, विकेट कीपर की दिशा में थ्रो आ चुका है। पटाखे ये संकेत है कि अभी महोत्सव बनेगा, जश्न बनेगा, पार्टी बनेगी और ये क्रिकेट श्रृंखला यादगार कहलाएगी। इसी के साथ ये 5वां ओवर समाप्त हो चुका है। 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हॅलो चेक लास्ट आणि स्वल्प वेळ किड झोन ओपन असता त्याच्यात किड झोन बंद जाता। 2 अंक किड झोन खेळू असल्यारी आता आपण वऱ्याची मागीर किड झोन बंद जाता। थैंक यू। हालांकि थैंक यू कहने में थोड़ा सा अफसोस जरूर हो रहा है चीयर बेबीज, जो कि बहुत उम्मीद के साथ, बहुत उत्साह के साथ वो नाचती झूमती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कमाल का नृत्य उन्होंने दिखाया है और कैप्चर किए गए दृश्य से निश्चित तौर पर जो देखेंगे बिल्कुल सराहना करेंगे। 6 रनों की दरकार। स्ट्राइक एंड पर जो कि बैट्समैन इस वक्त सुनील शनाय कप्तान जो कि जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और गेंदबाजी के लिए विघ्नेश भट्ट दूर वाले छोर से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। क्या कुछ योजना बनाते हैं और दूर वाला छोर जैसा कि आप जानते हैं गेंद को लेकर उस छोर से गेंद आउट विकेट बैट्समैन के लिए। इस बार ऑन साइड की दिशा में प्लेसमेंट के साथ गेंद को स्कूप किया, हुक किया, कुछ भी किया हो, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में गई है। शानदार स्ट्रोक है। अंपायर संकेत करने से पहले थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहते हैं, लेकिन उस फील्डर ने कोई संकेत नहीं किया और मुझे लगता है कि शायद, हालांकि अभी थैंक यू डीजे, थोड़ा सा रुकना चाहिए और थोड़ा सा कैप्चर किए गए दृश्य से पता लगेगा। और ये गेंद जो कि छूने के पश्चात, जी हां, इसी के साथ ये जी हां 4 रन। शानदार चौका, जीपीएल चौका। कमाल का स्ट्रोक। डीजे को अवसर के शानदार धुन को बजाएं। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीधर मेंडो ने प्रयास किया लेकिन वो रोक नहीं पाए। 35 रन बन चुके हैं, 2 रनों की दरकार। ये गेंद बैकवर्ड पर जाकर हवा में गेंद को थोड़ा सा पंच करने का प्रयास किया। फील्डर बहुत नजदीक आकर खड़े हुए हैं। एक ऐसी दीवार बनाई गई है ऑफसाइड का 30 गज का अगर दायरा अगर देखें तो अब अभिमन्यु भी बिल्कुल चक्कर खा जाए, उस तरह से चक्री वो बना गया। दूर वाली छोर से गेंद बैकवर्ड पर गए, गेंद को धीरे से सिरा दिया। दोनों बैट्समैन हां ना कर रहे हैं। थ्रो स्ट्राइक गेंद की दिशा में हुआ, विकेट पर नहीं गिरा और निशाना बिल्कुल अचूक होता तो बात बनती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 रन बन गया है। 36 रन बन चुके 3 विकेटों के नुकसान पर। पटाखे अभी भी आकाश की ऊंचाई को छूने की कोशिश कर रहे हैं और सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। दोनों बैट्समैन आपस में बातचीत कर रहे हैं। 6 मारला री कॅप्टनानं 5000 रुपये देतो मला। क्या बात है।
दूर दूर हर्षोल्लास सुनाई दे पड़ रहा है। ये गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। अभी थोड़ा सा और धीरज धरने की जरूरत है। मलपे यूनाइटेड के चाहने वाले समर्थक बिल्कुल तैयार खड़े हैं तालियां बजाने के लिए, मैदान के अंदर एंटर करने के लिए। उस छोर से गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कि रन को बनाया जाए। अभी भी बैट्समैन सुनील शर्मा एक कप्तान की भूमिका अदा कर रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी, 5 रन वो बना चुके हैं। 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। जबकि उस छोर से विघ्नेश भट्ट की गेंद दूर वाले छोर से ऑन विकेट। ये गेंद दोबारा खेलने का प्रयास, अंपायर ने कहा कि वाइड है, और इसी के साथ मलपे यूनाइटेड ने इस मैच को जीत लिया है और एक नया खिताब, एक नया कीर्तिमान बनाया है। ऐतिहासिक क्रिकेट श्रृंखला को जीतकर निश्चित तौर पर 2023 जीपीएल के वो हकदार बन चुके हैं। DJ, please stop the play. GPL 2023 title winners Malpe United. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मलपे यूनाइटेड बन चुकी है चैंपियन। पटाखे ये संकेत है कि जश्न बनेगा, पार्टी बनेगी। बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है, न भूलने वाला वो क्षण है जो कि मलपे यूनाइटेड ने आज यहाँ पर बिताया है। जी लेना चाहते हो इस पलों को, जिस तरह से उन्होंने इस पूरी श्रृंखला में प्रयास किया और आखिरकार जीतकर जीपीएल 2023 के वो चैंपियन बन चुके हैं। बहुत बहुत बधाई, मेनी कंग्रेचुलेशंस। और रॉयल चैलेंजर्स को कहेंगे अच्छा प्रयास, लेकिन वो रनर्स अप रहे, उनको अगली श्रृंखला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू डीजे, थोड़ा सा धीरज रखिए। तो इस प्रकार इस क्रिकेट श्रृंखला को जीतकर मलपे यूनाइटेड ने एक नया कीर्तिमान बनाया। रॉयल चैलेंजर्स रनर्स अप रहे, उनको अगली क्रिकेट श्रृंखला के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और मुझे लगता है कि अब पटाखों के साथ जश्न बनेगा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो किया जाएगा, उससे पहले मैं समझता हूं कि ये अवसर है हमारे साथी कमेंटेटर्स, अंपायर, स्कोरर जिन्होंने इस क्रिकेट श्रृंखला में अपना योगदान दिया, उन सभी को धन्यवाद करते हैं। और सुरेश भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी तरफ से धन्यवाद दें। तुमगेला नेक्स्ट इयर टीमा नाव दिवचा असलारी नरेश प्रभू कॉन्टॅक्ट करून तुमगेल टीमा नाव आज इदोकोनोची रजिस्टर करीत फर्स्ट कोणाला नाव येत की तंगेल प्रिफरेन्स आम्ही लेक्का घेताची तशें जावन नेक्स्ट इयर क्रिकेट टीम तुम्ही रजिस्टर करची जाल्यार आज इदोकोनोची रजिस्टर करीता नरेश प्रभू कॉन्टॅक्ट नंबराक मेसेज घालून की कॉल करून तुम्ही रजिस्टर करून घेवीत नेक्स्ट इयराक टीमा। एक अनाउन्समेंट, एक 2 व्हीलराच्या की अंग मेळ्ळार आसा, व्हेकल नंबर KA19 ES7009 ब्लू कलराच्या TVS ताच्या की अंग कमेंट्री बॉक्स आसा, लॉस्ट जाल्यार अंग कलेक्ट करका। तशीच यूथ ऑफ GSB दोकोनो मार्च एप्रिल अंतू काश्मीराक ट्रिप आसा, ताका तुम्ही तुमगेल नाव देविता काश्मीराक मार्च आणि एप्रिल अंतू ट्रिप आसा। तशीच मे अंतू दुबई अंतू एक उत्सव जावचो आसा, तशी तुम्ही प्लॅन करून दुबई केविता। थंय सुमार 2000 जन आमकां मेळटाची, हांगा दोकोनो 200-300 जणांन वच्चे प्लॅनिंग आतां सद्याक केलेलें आसा। मार्च एप्रिल अंतू काश्मीर ट्रिप, मे अंतू दुबईची ट्रिपाक तुम्ही घरांत डिस्कस करून जल्द तितले वगी बुक करून घेयाची। यूथ ऑफ GSB फेसबुक पेजारी हाजे संपूर्ण डिटेल तुमकां मेळटा। मल्पे यूनाइटेड कापास कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन यूथ ऑफ GSB तर्फेन हार्टी कंग्रॅच्युलेशन्स। तुमगेल सगळे टीमाक आमी काँग्रेट्स म्हणटा सची।
दोन्ही टिमा काय रनर्स अप RCB काय कंग्रॅच्युलेशन्स इत्याक म्हळ्यार दोन टिमांनी फायनल मॅच स्पोर्टिवली खेळलेलो आसा लायक एक मॅच आमकां पळोवपाक मेळ्ळें थँक्यू तशीच आमगेलो V2 अनंत कामत अण्ण आसा देखोर येवन वेदिकेर बयस्को म्हणून निमगून घेता आसा तशीच आमगेले गेस्ट प्रेझेंटेशन सेरेमनीक देखोर स्टेजार येवका म्हणून रिक्वेस्ट करून घेता आसा VIP गॅलरींत आमगेले गेस्ट आसला रे देखोर तुमी वेदिकेर येयाची तशेंच श्री राघवेंद्र कुडवा तुम्ही येवन स्टेजार बयस्को म्हणून निमगून घेता आसा प्रेझेंटेशन सेरेमनींत तुम्ही हे संदर्भात आसुका म्हणून रिक्वेस्ट करून घेता आसा तशेंच आमगेले गेस्ट आसला रे देखोर तुम्ही स्टेजा वयर येवका श्रेया स्वीट्साचे रमेश मल्ल्याण हांगा आशिल्लो देखोर तुम्ही वेदिके वयर येवन बसका मॅन ऑफ द सिरीसाक मेळटा आसा पै सेल्स सुजुकी दुकानो सुजुकी एर्नेस भारी चंद अशी तसले एक गाडी तुम्ही पळयत स्टेजा एदराक आसा मॅन ऑफ द सिरीज कोण जाता की तांकां गाडी मेळटा आणि एक सुजुकी एक्सेस गाडीचे की मेळलेलो आसा स्टेजा लागीं येवन तुमी तुमगेली की कलेक्ट करीता एक सुजुकी एक्सेस गाडीचे बिगा तुवें मेन स्टेजा लागीं आसा तुमी येवन तें कलेक्ट करीता थँक्यू पंजाबी डोल थँक्यू सो मच आता आमगेल वेदिके वयर अशे गण्याक आमी धन्यवाद सांगचे समय त्याच्यात तरी प्रेझेंटेशन सेरेमनी असतं दोन टिमांनी जल तितले वगी मेन स्टेज येत येवका RCB तशीच मल्पे युनायटेडच्या येत येवका म्हणून निमगून घेत आसा एक्सपर्ट इन्स्टिट्यूशन दोन आमगेलो टू अंकुश नायक आसाची तांकां आमी मोगान धन्यवाद दिता आसाची मंगलपाडी नरेश शणै हांणी येवन मोमेंट दिवका म्हणून आमी निमगून घेता आसाची ह्या संदर्भेरी यूथ ऑफ GSB फोटोग्राफर
रमित फोटो काढूक जल्दी तिथले वगी येत राहू का जोर क्लॅप सेवा श्री अंकुश नायक हंका थीम म्युझिक थँक्यू अंकुश तशीच आमगेलोटू CA जगन्नाथ कामत आमगेलोटसाचे हंका मी धन्यवाद या संदर्भात सांगता असाचे मस्त रीतीरी अंगेला सपोर्ट असं दयकोरनो तुम्ही घेऊ का स्टेजा वेरे म्हणून निमगून घेता असाचे दयकोरनो विशेष रीतीरी तुमगे सहकार आमका खंडित असता तसेच उजुरेचे श्री राजेश पाई हंका या संदर्भात धन्यवाद देता असाचे तसेच आमगेलोटू मोगाचे वासदेव कामत वासಣ್ಣ हंकाय मी धन्यवाद देता तशीच पुसुलन दकोनो सुरेश पैमाम तुमकाय मस्त धन्यवाद तशीच रामदास पैमाम तुमकाय आम्ही या संदर्भात धन्यवाद सांगता सची तशीच यजमान दकोनो वरदराज पै आमगेलोटा सची अडिगे बालकृष्ण शणे हंकाय आम्ही या संदर्भात सांगता सची तशीच किरण पै हंकाय आम्ही या संदर्भात धन्यवाद सांगता सची पैसेल सुझुकीच्या गणपती पै तसेच अरुण पै हंकाय आम्ही या संदर्भात धन्यवाद देता सची तुमका मोगाच्या धन्यवाद अपास आम्ही या संदर्भात सांगता सची तसेच V2 अनंत कामत हंकाय मोगाच्या धन्यवाद तसेच आमगेलोटू निरंतर जावन सपोर्ट करचे तसले श्री राघवेंद्र कुडवा हंकाय आम्ही या संदर्भात विशेष जावन धन्यवाद देता सची तसेच हनुमंतಣ್ಣ हंकाय या संदर्भात धन्यवाद सांगता सची आता दोन टीमाचे प्लेयर्स जलतीतली बग्गी ವೇದಿಕೆ ವೇರಿ येवका निमगून घेता मल्पे युनायटेड तशीच RCB जलतीतली बग्गी तुम्ही स्टेजा ಎದುರಾಯಚಿ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ आमगेलोची श्री गोपाल कृष्ण भट माम तुम्ही कमेंट्री केला आमगेलोटू वॉलंटियरिंग केला प्रति एक कಡೆ नसचे दयकोरून तुम्ही येऊन एक मेमेंटो कलेक्ट करकमण मी निमगून घेता सची तशीच ಹಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಗೋಪಿ ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದೇವರಾಜ್ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ DJ ಸ್ಮಿತ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ DJ ಸ್ಮಿತ್ तशीच पेंडाल घालाल तसले HDK ಶಿವಣ್ಣ आणि ಸ್ಪಂದನ ನಾಗರಾಜ್ ನೀವಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ कॅटरिंग गारी आमक मस्त सहकार दिला तसले कामत कॅटरर्स श्रेया स्वीट्स प्रभावा कॅटरर्स सुधींद्र असल्यार दयकोर तुम्ही ವೇದಿಕೆವೇರಿ येवका ತಂದೂರು ವಾದಿಯಣ್ಣ तुम्ही असल्यारी दयकोर ವೇದಿಕೆವೇರಿ येवका ಹಾಗೆ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ಸೌಜನ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು मेमेंटो कलेक्ट ಮಾಡಬೇಕು तसेच VV क्रिकेटर्सचे सगळेची तुमगेले टीमान ವೇದಿಕೆವೇರಿ येवका म्हणून निमगून घेता VV शिवಣ್ಣ तसेच मोहनಣ್ಣ तसेच तुमगेले टीमाक दयकोरनो अपयाची तुम्ही ವೇದಿಕೆವೇರಿ येवका म्हणून निमगून घेता VV टीम VV क्रिकेटर्स रमेश तुम्ही येवका गणी तुम्ही पुरजनाना ವೇದಿಕೆವೇರಿ येवका तसेच फ्लेक्स घालनो तुम्ही सेल्फी पॉइंट थंय पळयलाय भारी लायक केला तसले आकृतीचे कार स्ट्रीट अंतू तशीच कोट्टारांत तशी तसले आकृती हाजे वरुण पै तशीच नरेश प्रभू हांनी दयकोरनो कलेक्ट करक म्हण आमी निमगून घेता तशी तशीच तुमकां एंट्रन्सार येताना भारी चंद एंट्री दिला तसले फ्रंट्स अरेंजर्स
फ्रेंड्स अरेंजर्स लक्ष्मण बघता तुम्ही खै असल्यारी दे करून येऊ का बारी चंद एंट्री या पण तुम्ही प्लॅन करून आमके एका विशेष सेल्फी कडूक ಅವಕಾಶ करून दिलाय तुमका या संदर्भेरी ಧನ್ಯವಾದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗ್ಗು ಕದ್ರಿ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜಗ್ಗು ಕದ್ರಿ तसेच LED ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಳಿಗ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮೊಮೆಂಟೋವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜಗ್ಗು ಕದ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬೌನ್ಸರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಒಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ तसेच ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಾಳಿಗ ಕುಮಾರ್ LED ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಮೆಲ್ವಿನ್ ಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೆಲ್ವಿನ್ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಸುಗಮ ನಾಗರಾಜ್ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಬೋಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ईशा लॅब्साचे भार्गव असलारी तुम्ही वेदिकेवर येऊ का म्हणून निमगून घेताय सर आणि प्रति एक डिपार्टमेंटांतू मस्त जनान काम केला इथले होड इव्हेंट जाऊ का म्हणून जाला रे तिथले सुलभ ना प्रति एकले तंक 3 दिवस निरंतर जाऊन काम केलं तसले प्रति एक डिपार्टमेंट फूड झोन अशा पुरा फूड कोर्टाचे स्टेज अशा पुरा मर्चेंडाइज स्टोर अशा पुरा VIP ॲक्सेस पॉइंट अशा पुरा VIP फूड कोर्ट अशा पुरा किड झोन अशा पुरा रिजिस्ट्रेशन काउंटर अंतू मस्त जन आमगे लोट जॉईन जालीची तांकाय धन्यवाद ग्राउंड अंतू आमगे सगळे वॉलंटियर्स टीम या क्रिकेट मॅच टाइमार जावक जाल्यार तांणी काम केलें तांकाय धन्यवाद तशेंच बोटिंग झोनांतू बोटिंग झोनाक व्यवस्था केलें स्टेजाक व्यवस्था केलें तसेच तांकाय आमी ह्या संदर्भेरी धन्यवाद दिता सचे तशेंच बॉम्बेचे ह्या पटी बाउन्सर्साक आमी आपोवन एक छंद व्यवस्था केले बॉम्बेंत कसो सिस्टम आसता की तांची GPL उत्सवाक हाडयल्या मुंबई देखून कोणी असल्यार प्रशांत पुराणी कडना तुम्ही असल्यार दय करून तांगेले एक मोमेंट कलेक्ट करका म्हणून निमगून घेता आसा प्रज्वल जो कोणी असल्यार तुम्ही दय करून येवन कलेक्ट करका तशेंच आमगे लोटू नॅचरल आयस्क्रीमाचे श्रीनिवास कामत हांणी आसाची ग्राउंडांतूची दय करून तुम्ही येवन वेदिकेर येऊ का तुम्ही आज सकाळी देखून निरंतर जानो रघुनंदन कामताना मम्माना रब्बोनु शियाळे उद्दा चिल्ड दिलेलं आसा प्रति एकल्यांक तन्नीची रब्बोन पळोवन व्यवस्था केल्या तांकां एक जोर क्लॅप्स ह्या संदर्भेर येऊ का सुमार 20,000 चड कप तांणी दिल्लेलो आसा कितले जन पिल्ल्याची म्हळ्यार 1 लाख तांणी सांगता आशिल्लीची आमकां मस्त खूश जाला तांनीची स्वता रब्बोन हें काम केला तांकां आमी मस्त धन्यवाद ह्या संदर्भेर दिता आसाची तशेंच आमगेले रमित मल्ल्या तशेंच अतुल ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮೊಮೆಂಟೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶ್ರವಣ್ ಫಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಆರ್ಯನ್ ಡ್ರೋನ್ ಸನ್ನಾರ್ಟ್ ಆರ್ಯನ್ ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ आमगेले यूथ ऑफ GSB चे टीमाचे मस्त कॅमेरामॅनान या संदर्भेरी वर्क केला निरंतर जावन आमगे लोट आसताची तांकां आमी ह्या संदर्भेरी
मस्त धन्यवाद दिता सची सुधाकर शेट्टी गुरु रमेश अण्णा तशेचे हंग पूरा मॅनेज करता आमगेले संतोष शणै हांकां ह्या संदर्भेरी मस्त अनंत अनंत धन्यवाद दिता सची आमगेले होड थंड आसा आमगेले थंडाचे नाव एक मिस जाल्यार प्रॉब्लेम जाता म्हणचे खातीर त्या नाव सांगू वचना जाल्यार सद्या रे वॉलंटियर्सांका एक धन्यवाद आमी मस्त सांगताची मर्चंडायज स्टोरांत यूथ ऑफ GSBचे मर्चंडायज तुम्ही पळयना का ताजे गोविंद मामू तुम्ही देखोर वेदिकेर येवका तशेंच विजयन शणै असल्यार तुम्ही येविता गायत्री माई आणि हांगेल एक सगळे थंड तुम्ही खंयच्यो हांगा असल्यार देखोर येवन वेदिकेर एक मेमेंटो घेवका तुम्ही केलेल्या कामाक आमगेल सना एक थँक्स हे मुखांतर संतोषाची जानो मस्त जन काम केलेलं असाचे सृजन रील्स करचे तसले संजन शेट्टी ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಪೂಜಾ ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪೂಜಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು मर्चंडाइज पांडरंग तुम्ही येऊन कलेक्ट करीत मेमेंटो झालं आमगेले पूरा वॉलंटियर्सांका आमी एक वॉलंटियर्स मीट दवरता आसाची त्या संदर्भात तुमकां होड धन्यवाद दिवचे आसा काम केलें तसले प्रति एक वॉलंटियरान त्या वॉलंटियर्स मीटाक येवका एक धन्यवाद तुमकां सांगू आसता नेक्स्ट वार भितरी तेवूय कार्यक्रम आसता तातूंत तुमी भाग घेवूं का म्हणून ह्या संदर्भात आमी सांगता आसाची GPL उत्सव 2023 आज लास्ट डे मस्त जनाक एन्जॉय केला म्हळ्यार खुश जाला रे आनी केलो जनाक जल्ली नवे म्हळ्यार एक बेजारू मनांत आसता येवची वर्साय मस्त सकाळी विशेष रितीरी तुमकां GPL पळोवच्याक मेळटा जावन नेक्स्ट इयर तुम्ही डेट ब्लॉक करून घ्यायची म्हणून या संदर्भात आम्ही सांगता आसाची आता मस्त वेळ करण्यात येयलाय प्रेझेंटेशन सेरेमनी जावचार आसा ताच्या काही फुडें आमगेलो टू पुसुलोनाचे रामदास पै आणि सुरेश पै तुम्ही दय करून येद्रा येवका म्हणून निमगून घेता तुमकां कितले धन्यवाद सांगल्यार या संदर्भात पावना चंद्रकांत कामतमाम तुम्ही येद्रा येवका तशेंच आमगेल सगळेचे कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे मंगलपाडी नरेश शणै नरेश प्रभू पूर्ण जनाने देखोर येद्रा येवका सुरेश माम रामदास माम तुमगेले सपोर्ट आमकां कद्दन जाल्यार मस्त इम्पॉर्टंट प्रथम वर्स देखून तुम्ही आमकां मस्त रितीरी सहकार दिलेलो आसा जोर क्लॅप्स पुसोलोना ग्रुपाक येवो इत्याक म्हळ्यार प्रति एक आमी केलेलें तसलें काम तांणी रेकग्नायज केला कोडियाल बेलांत अशी तसले मंजेश्वर गोविंद पै सर्कल काही तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन मस्त आसा अपास सांगका म्हणना इत्या म्हळ्यार तुमी पूर्ण जनान त्या विशय पळोवन आयकून तुमकां गत आसा तशें जावन पुसलोना ग्रुपाक ह्या संदर्भात आमी अनंत अनंत धन्यवाद दिता आसाची तशेंच आमगेलो टू यजमानाचे वरदराज पै माम आसा तुमी येद्रा येवका देखोर म्हणून हांव निमगून घेता आसा तुमगेले सहकार आमकां निरंतर जावन आसा अशीच केन्नाय सपोर्ट आसका म्हणून आमी निमगून घेता आसाची तुमकां ह्या संदर्भात आमी मोगान धन्यवाद आता आमकां विंगड रुपारी सपोर्ट करचे तसले आसाची जावन एक्सपर्ट इन्स्टिट्यूशनाचे अंकुश नायक हांकां आमी मेमेंटो दिवन धन्यवाद ह्या संदर्भात सांगता आसाची निरंतर जावन तुमगेले सपोर्ट यूथ ऑफ GSB तशेंच कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन आकास म्हणून आमी निमगून घेता आसाची आमी क्रिकेट केल्ले म्हणली कुडले
आमकां सपोर्ट करताचे. तशेंच कोरोना टायमार कोविड टायमार आमकां रेशन जावका आशिल्लें एमर्जन्सी राजेश पै मामान उजरे देखून प्रत्येक व्यवस्था केले लॉरी व्यवस्था आमी करून थंय देखून प्रत्येक आयटम हाडले. राजेश अण्णा तुमकां आमी ह्या संदर्भेर मस्त धन्यवाद दिता आसाची. राजेश अण्णा अशीच सहकार आसा तुमगेले म्हणून निमगून घेता आसाची. आनी तशेंच आमगेलो आमी क्रिकेट करता म्हणटाना आमकां प्रथम जावन उडगास येवचें कसं म्हळ्यार आमगेले प्लेयर्साक मॅन ऑफ द सिरीज खेळला एक लायक कसं नाही दिवका म्हणून आमकां पैसेल सुजुकी देखून एक गाडी दिताची. त्या प्लेयराक मस्त मोटिवेट करता येवचे वर्सां चांकोन खेळका म्हणून. आमगेलो गणपती पै मामा तांकां हांव मोगान कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन यूथ ऑफ GSB तर्फेन धन्यवाद सांगता आसाची. आमगेले इतले व्हड कार्यक्रम जावका जाल्यार एक लॅक चंद करून दवरून घेवका. त्या लेक्काच्या विशयार चंद कोण आमकां पळोवन घेवचें म्हळ्यार CA जगन्नाथ कामत अण्णान त्या मात्र न्हय हांव काम करता वॉलंटरी म्हणून मात्र न्हय तुमकां रुपये रितीरी हांव सपोर्ट करता म्हणून जगण्णान मस्त आमकां सपोर्ट केलेलो आसा. तशें हांव आमकां गौतम पै संजना तुमी दोग जाणां आसल्यार दे करून ओटू घेयाची तुमगेले एक टीम. तशेंच संजना आमगेले टिमाचे HR पुरो पळोवन घेता. जावन तुवें वेदिके वयर येवका म्हण हांव निमगून घेता आसा. CA गौतम पै असल्यार तुमी येवका म्हण हांव निमगून घेता आसा. तुमगेले सहकार केन्नाय आमगेलो टस म्हणून ह्या संदर्भार आमी निमगून घेता आसाची. तशेंच हे कार्यक्रम जावका जाल्यार प्रथम जावन जगण्णा गौतम पै तशेंच संजना पै तुमकां ह्या संदर्भेर धन्यवाद दिता आसाची. मस्त थँक्यू. हे कार्यक्रम जावका जाल्यार आमकां करंटा वेवस्था अत्यगत्य. तुमी पुरा लायट्स पळयता आसाची. हाजी मागशी वर्क करता अशी एक जनरेटर. हे जनरेटराक फ्यूल जावका बोटिंगाक फ्यूल जावका पेट्रोल डिझेल असोसिएशनाच्यांनी मस्त हेल्प केला. आमगेलो सौकार किरण पै अण्णा आसाचे हांगेले सगळे एक टिमाक तशेंच हांकां पर्सनली विश्वास अण्णा पुतूरचे विश्वास अण्णा हांकां आमी ह्या संदर्भार मस्त धन्यवाद दिता आसाचे. तशेंच आमगेलो वेंकटरमण देवस्थानाचे मॅनेजिंग ट्रस्टी अडिगे बालकृष्ण माम तुमकां आमी ह्या संदर्भार मस्त धन्यवाद दिताचे. आमकां निरंतर जावन पयलीं 13 कशा पुरो लाईव्ह करता जाल्यार संपूर्ण सहकार यूथ ऑफ GSB तांगेले आसा. तशेंच तुमी फूड कोर्ट अशा पुरो पेड काउंटर अशा पुरो चाट्स पुरा भारी चंद करून हल्ला आनी लायक आशिल्लें म्हणला हाका पुरा कारण श्रेया स्वीट्साचे रमेश मल्लिमाम हांच्या संदर्भार आमी मस्त धन्यवाद दिता आसाची. तशेंच आमगेलो मोगाचे कुंचाडीचे वासदेव कामत अण्णा आसाची. वासण्णा ज्ञान म्हणल्यार तांणी घेवका इत्याक म्हळ्यार तांगेले बायले हंग आसाची एक स्पॉन्सर म्हणून मात्र न्हय वॉलंटियर जावन तांणी मस्त काम आमगेलो सेरवून करताचे. तांकां जोर क्लॅप्स ह्या संदर्भार येवो. एक कार्यक्रम जावका जाल्यार हांगेले पुरा आवश्यकता आमकां मस्त आसा. तशेंच आमगेलो V2 अनंत कामत अण्णा आसाचे हांकां आमी ह्या संदर्भार संदेश अण्णा येद्र येवका. आमगेले यूथ ऑफ GSB चे कार्यक्रम तशेंच GPL निरंतर जावन तांगेले सपोर्ट आसा तांकां ह्या संदर्भार आमी धन्यवाद दिता आसाची. तशेंच आमगेले क्रिकेट म्हणून मात्र न्हय A to Z कसले कार्यक्रम केल्यार हांगेले निरंतर जावन कॉन्ट्रिब्युशन आसा. येद्र येवका म्हणून निमगून घेता आसाची श्री राघवेंद्र कुडवा प्रत्येक विशयार सहकार तांगेले आसा तांकां आमी ह्या संदर्भार मस्त धन्यवाद सांगता आसाची. एक कार्यक्रम जावका म्हण जाल्यार आमकां विंगड विंगड परमिशनाची आवश्यकता आसा. हे ग्राउंडांत माते उड्डूचे म्हळ्यार ताका वॉटर टँकराची आवश्यकता आसा. अशी विंगड विंगड आमकां कसं ऑफिशियल वर्क जावका की ते पुरा कोण दिवचे तसले
हनुमंत कामत अण्णाक एक जोर क्लॅप सेव निरंतर जावन आमगे लोटू कसने काम कदनाय मध्यरात्री सांगल्यारी कोण दिवची तसले हनुमंत कामत अण्णा आमगे लोट आसाची आणि कार्यक्रमाक एक बॅक बोन म्हणल्यार तप्प जायना आमगेले ಒಟ್ಟು कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे आमगेलो मग मंगळूರು दक्षिण क्षेत्राचे शासक श्री वेदव्यास कामत हानी वेदिके वेर येताची जोर क्लॅप्स मारची मुखांतर तांका मोगान आमी स्वागत करूया श्री वेदव्यास कामत हानी कितलेय बिझी असल्यारी एक आमका विशेष जावन स्वल्प टाइम देवन पूरा प्लॅनिंगाक सहकार दिताची जावन बाबಣ್ಣ मोगान आमी आपूचे तांका अपासाम स्वागत हे संदर्भेरी करतास आता तशेंच आमगेल स्पॉन्सर्स कोणी हांगा असल्यार दयकोर तुम्ही वेदिके वेर येवका कसनय लकोनुकाचे दयकोर न्हू तुम्ही सकाळ असल्यार आमकां दिसना तशें हांव तुम्ही कोणय असल्यार येयाचे तशेंच स्पेशली एबल्ड मॅच आमी केलेले ताका आमी प्राइज दिता सची म्यूट क्रिकेट म्हणून आमी प्रति वर्ष एक सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट अदकून विशेष मॅच करताची तांकांय सपोर्ट करका म्हणून सांगून मस्त जान खेळलीची फर्स्ट आमी बेस्ट बॅट्समॅन आपयताची अनुष बेस्ट बॅट्समॅन येवको म्हणून निमगून घेताची तशेंच बेस्ट बॉलर इकबाल येवका म्हणून निमगून घेता तांकां आमगेल्या विवी क्रिकेटर्सांनी देखोर न्हू आपूण हाडका स्पेशली एबल्ड एक मॅच जाता ದಯಮಾಡಿ ಅನುಷ್ ಅವರು ಐಲಾಚಿ ತಂಗೆಲೆ तशेंच इकबाल बेस्ट बॉलर कंग्रॅच्युलेशन्स एक आमी ऍक्टिव्हिटी करताची प्रति वर्ष तांकां सपोर्ट करका तांणी खेळका तांकां गम्मत जावका म्हणून सांगून हें एक इनिशिएटिव्ह निरंतर जावन कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन ಅದಕ್ಕೂ ಜತ್ತಸ್ रनर अप मैंगलोर सुपर किंग्स जोर क्लॅप सेव तांणी मस्त चंद करून खेळताची विशेष एक तांकां आमी व्यवस्थित करून एक मॅच करताची प्रति वर्ष कंग्रॅच्युलेशन्स रनर अप मैंगलोर सुपर किंग्स Congratulations, Mangalore Super Kings. Next winners are amazing shots. तशेंच आमगेले क्रॅकर शो तुम्ही काली पळयला आजी पटाकी पळयले गणपती भंडारकर बंदरान तशें जाल्यार गणपती भंडारकर हांकां सगळे टिमाक धन्यवाद सांगता तशेंच पांडणाकय स्पेशल थँक्स ह्या संदर्भेर आमी दिता सची कंग्रॅच्युलेशन्स अमेझिंग शॉट्स नेक्स्ट मल्पे युनायटेड आणि आरसीबी मध्ये जलल मॅच आणतो मॅन ऑफ द मॅच कोणाका ऐका ना समीर शानबाग मल्पे युनायटेडाचे समीर शानबाग लास्ट मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच येवन घेवका म्हणून आमी निमगून घेता आसाची जोर क्लॅप्स
फायनल्साच्या मॅन ऑफ द मॅच ह्या संदर्भात वो कंग्रॅच्युलेशन्स. नेक्स्ट नेक्स्ट अवॉर्ड बेस्ट बॅट्समॅन. सगळे टुर्नामेंटांत बेस्ट बॅट्समॅन. एनी गेसेस? शशांक भंडारकर आरसीबी. सगळेची टुर्नामेंटांत 76 रन मारनो आईचे बेस्ट बॅट्समॅन अवॉर्ड घेतला आसा शशांक भंडारकर. कंग्रॅच्युलेशन्स. तशीच नेक्स्ट कॅटेगरी अशे बेस्ट बॉलर. कोणाका ऐका ना. बेस्ट बॉलर टाइटल गोes to विनायक पै, मल्पे यूनाइटेड with 13 wickets. विनायक पै, congratulations. बेस्ट बॉलर हका पय्या म्हणून मोगाना पैदाची जोर क्लॅप्स विनायका संदर्भ रेवो म्हणून निमगन घेता. बेस्ट बॉलर टाइटल goes to विनायक पै for 13 wickets. नेक्स्ट वर्स आम्ही एक अवॉर्ड देताची बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर. कोणा मेळो पुरा ऐका ना. बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर goes to आदेश भट्ट ऑफ कोडियाल सुपर किंग्स. आदेशाका जोर क्लॅप सेवा मुखारे आणि काही चंद कोर खेळचे तसले अवकाश मेळो. ओड प्लेयर जाऊ म्हणून मी कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन अदून विश करता. सची KSK चे आदेश भट्ट स्टेजार येता. सची कंग्रॅच्युलेशन. जोर क्लॅप सेवा या वर्षाचे बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर. आर्च फार्मा लॅब्स GPL उत्सव 2023. नेक्स्ट तुम्ही रक्त शितसले मॅन ऑफ द सिरीज सुझुकी एव्हनिस बाईक आमकां हे प्राइज हँड ओव्हर करू का पै सेल्साचे गणपती पै माम. तशीच तंगेल पुत्ताने सकल येवका अरुण पै आमकां विशेष रितीन तांगेले सपोर्ट कदनाय आसता. जावन तांणी दय करून सकल येवका. तशेंच बाबण्णा तुम्ही सकल येवन राबुका म्हणून रिक्वेस्ट करून घेता. सुझुकी एव्हनिस गाडी एक बारी चंद गाडी. कोणा मेळो बरो मॅन ऑफ द सिरीज. ऐका ना. मॅन ऑफ द सिरीज टाइटल goes to 86 रन्स मारनो 5 विकेट घेतले तसले डेडली पॅन्थर्साचे विघ्नेश शनाय. स्मार्ट सिटी मंगळूर अंत काम करचे तसले विघ्नेश शनाय कॉन्ट्रॅक्ट बेजारे तने काम करताचे. कद्री पार्का लगे तुम्ही होड होड लाईटा खांब पळयला रे प्रति एक ते रब्बोन काम करचे तसले विघ्नेश शनाय. आमगेलो तो असं कंग्रॅच्युलेशन. सुझुकी एव्हनिस गाडी तांका मेळला सर. नरेशनानं ते करून येत राहू का. मॅन ऑफ द सिरीज विघ्नेशाक मेळता अशे दोन्ही पटी दोन्ही गाडी आता घरांत जल्ला. जोर क्लॅप्स विघ्नेशाक हे संदर्भ रेवा म्हणून निमगून घेते. तसे जे मंगलपाणी नरेश आहे आणि ते करून गाडी लागे येऊ का म्हणून मी निमगून घेतो. सची नरेश एक सेकंड एक फोटो
निरीक्षणानं गाडी लगी येऊ का मॅन ऑफ द सिरीसाचे फोटोग्राफर रबू का म्हणून मी नेमून घेत असाचे कंग्रॅच्युलेशन्स विघ्नेश दोन्ही सुझुकी गाडी आता घरांत असा राईड सेफली कंग्रॅच्युलेशन्स नेक्स्ट देखोर नमगेल्या गेस्टाना वेदिके वेर येवका म्हणून मी नेमून घेत असाचे तसेचे विघ्नेशाನ एक ಸಣ್ಣ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡಕ ಅವ ತವಳಿ ಸಂಗಿಲ್ವರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 15-20 ದಿವಸದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶೆಣೈ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಸೊರ್ತಾಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಒತ್ತಾಸ कोडियाल सुबा किंग्स का टीमाच्या नियोनो ट्रॉफी कलेक्ट करका म्हणून निमगून घेता 7 वर्षांत मस्त बटी यांनी या टायटल घेतला. या वर्षा फर्स्ट प्लेस घेवका म्हणून लेखिले जलारी हार्ड लक तांका सेकंड रनर अप मिळता. कोडियाल सुबा किंग्स फर्स्ट 8 प्लेयर्स आणि तुम्ही येऊ का मगिरी ओनराने येऊ का म्हणून मी नेमून घेता सची जल्दीतली ಬಗ್ಗೆ येऊ का म्हणून मी रिक्वेस्ट करून घेता सची. कोडियाल सुपर किंग्स फर्स्ट 8 प्लेयरांना येऊ का 8 प्लेयर्स एदरायाचे फर्स्ट लास्ट का टीम ओनर्स याची प्रथम जाऊन फर्स्ट प्लेयर्स आणि येऊ का म्हणून नेमून घेता सची. Congratulations, Kodial Super Kings. एदरा तुम्ही एक नील डाऊन पोझिशनवर बसला रे आमगेल गेस्ट दिसताची दैकोरनो नील डाऊन जायाची पुरा प्लेयर्स दैकोरनो तुम्ही नील डाऊन करका म्हणून निमगून घेतास. प्लेयर्स पूर्व जनाने बैसुका या संदर्भ रे ओनर्स आणि दैकोरनो वेदिके वेर येऊ का कोडियाल सुपर किंग्स टीम के जोरो क्लब से या संदर्भ में वो 7 एडिशन अंतु एक टाइटल घेऊन बसची. अंजना कामत संदेश कामत तशीची संजना वेदिके वेर येऊ का म्हणून निमगून घेतास. उल्लास ಒಟ್ಟು ಮೆಲ್ತನ್ ಯೋ 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 ರೆ ಎತಾನ ಸೋಡಿ ಹೆಚ್ಚನ ಯೋ 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 ರೆ ಉರ್ಗಾಸು ಬಾರಿ ಬತ್ತನ್ ಯೋ 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 ರೆ Thank you Kodial Super Kings. तशीची नेक्स्ट रनर अप RCB. Congratulations तुम्ही
प्रथम जावन भाग घेऊन पूरा प्रेशर हँडल करून रनर अप तुम्ही आज घेतची ये अवॉर्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी का आमಗೆಲ್ಲಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ಖ್ಯಾತಿಯ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆವೇರಿಯತ್ತ ದಯಮಾಡಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸುವಂತಹ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. RCB टीम अचनी देखोरनु स्टेज अवेरियो का तुमगेला परफॉर्मेंस बदलची फर्स्ट सीजन अंतची भारी लाइक केला प्लेयर्स फर्स्ट याची मागीर लास्ट का ओनर्स याची Youth of GSB have worldwide platform for better life. GPL world kitli wonder. Visoru China henda. प्लेयर्स देखोरने एदरा बैसाची Etana sodi hechana ulasu ottu meltan कंग्रेचुलेशंस RCB. RCB कंग्रेचुलेशंस जोर क्लॅप्स सगळे टीमागे संदर्भात येवा क्रिकेट खेळ्या टुगेदर मारी तू बाउंड्री सिक्सर कुळार आमका मंगळूरा रे वंदूया खुशी सात खया 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 सम खया खया खा गोलू कोणता नाहीचे वारंतू रेसिपी नवी नवी फूड कोटांतू हळू हळू देवाई तू थैंक यू सो मच. नेक्स्ट winners champions GPL Utsav 2023 आचे GPL क्रिकेट आचे champions Malpe United. ಉಲ್ಲಾಸ ಒಟ್ಟು ಮೆಲ್ತಾರೆ ಎತ್ತಾನ ಸೋಡಿ ಹೆಚ್ಚನ ಉರ್ದಾಸು ಬಾರಿ ಬರ್ತನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೇಲ ಟುಗೆದರ್ ಮಾರಿ ತು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕುಳಾರ ಅಂಕ ಮಂಗಳೂರ थैंक यू RCB थैंक you Malpe United चनी देखोरनु ವೇದಿಕೆ ರಿಯೋಕಮನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಸ Malpe United गोलू कोणता नाहीचे वारंतू रेसिपी नवी नवी फूड कोटांतू हळू हळू देवाई तू पोटांतू चिराई बोंता बोंता या हा या हा या हा Congratulations Malpe United players first याची Congratulations Malpe United तांका
चॅम्पियन्स ट्रॉफी ओटूची रोलिंग ट्रॉफी समेत या वर्ष मिळता असा प्रति वर्ष आम्ही रोलिंग ट्रॉफी एक दिताची 7th सीझनाचे चॅम्पियन्स मल्पे युनायटेड. Congratulations, Malpe United. Rolling trophy attasa palayachi rolling trophy. Congratulations. उल्लास ಒಟ್ಟು ಮೆಲ್ತನ್ ಯೋ 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 ಯೋರೆ ಎತ್ತಾನ ಸೋಡಿ ಹೆಚ್ಚನ ಯೋ ಯೋ ಯೋರೆ ಉರ್ಗಾಸು ಬಾರಿ ಬತ್ತನ್ ಯೋ 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 ಯೋರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ खेलिया टुगेदर यो यो योरे मारी तू बाउंड्री सिक्सर यो 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 योरे कुलार अंक मंगलूर यो यो योरे Thank you. खुशी सरकार Malpe United. Thank you so much. Platform for better life. GPL world kitli wonder. Bisoru jaina hendava. Yo 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 re. Etana sodi hechana. Yo 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 re. Ullasu ottu meltan. Yo 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 re. Etana sodi hechana. Yo 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 re. Urgasu parivattan. Yo 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 re. Cricket खेलिया together. Thank you, music. Thank you. Thank you, Malpe United. Thank you so much. तशीची ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ 2 ಮಾತನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೂಪೇಶ್, ದಯಮಾಡಿ 2 ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಮಾತಾಡೋವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿನೂ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂಥ MLA ಸರ್, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಕಂಬಳದ ದಿನ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾದರೂ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ, ಇಂಥ ಒಂದು MLA ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಪಾಪ ಬಂದು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಒಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ IPLಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೂರ್ನಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲೆ ಅಂತ ಬರೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಬಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬರಿದಿರೋದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ನರೇಶ್ ಶೆಣೆ, ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ತರಪೇನ ತನಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಾಸಮಯ ಸಂಘ ಸಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಪೇಶ್. तशी जी बाबांना एक 2 मिनिट थँक्स सांगनातला रे. खाली 2 मिनिट पॉलिटिशियन चढ उलयत म्हणला आज 2 मिनिट उलोवका म्हणून रिक्वेस्ट करून घेता आसा. आमगेले समाज बांधवांक एक धन्यवाद सांगता म्हणून निमगून घेता. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರಿ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ವ ಮಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ तशीची सकल सर्व क्रिकेट क्रीडाभिमानी आणि क्रिकेट प्लेयर्सांक हांव धन्यवाद सांगता. आज ही प्रथम बहुमान द्वितीय बहुमान तशी पूर्ण रितीय बहुमान घेतलेल्या सर्व आमच्या समाज बांधव क्रिकेट प्लेयर्सांक हांव कंग्रॅच्युलेशन्स. गॉड ब्लेस यू. आणि काही चंद रितीन आणि मुखार सुने वर्ष अशीची तुमगेला परफॉर्मन्स असो लायक क्रिकेट आयोजन करा आणि काही चांग रितीरी आणि काही मस्त क्रिकेट मात्र नाही आणि काही मस्त रीतीचे खेळू आम्ही निरंतर जाऊन हे कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन तशीची आणि सर्व आमगेल्या समाज धर्म सर्व जनाले सहकार निमित्त कोरिया म्हणून सांगून संघाची आमकां सहकार दिलेला तनु मना धन सहकार दिलेला तसले हे कार्यक्रम येद्दोड यशस्वी जावक म्हणून जाला री. इतले रीती री यशस्वी जावन एक व्हड समारंभ जावक म्हणून जाला री. आमगेल समाज बांधव आमगेल्या सर्व जनाले सहकार आसा. तंतोय व्हडड्ड कोडीग दिवन व्हडड्ड देणीक दिलेलं तसले मनुष्य आसाची ना कार्यकर्ते जावन काम केलें तसले कार्यकर्ते आसाची सर्व जनांक हांव ह्या विशेष जावन धन्यवाद करताची. सह्याद्री कॉलेज एसोसिएशन तांकांय धन्यवाद करताची. हांगा मेळाल सर्व जनांक नमस्कार करता. धन्यवाद. धन्यवाद बाबांना. या संदर्भात पूरा आमगेल्या गेस्टांक हांव धन्यवाद सांगता. अशी साकार तुमगेल्या प्रति वर्सास म्हणून अपास तुमगेल्या निमून घेता. धन्यवाद. थँक यू सो मच. आणि तुमकां सांगिल्ली वरीची मार्च एप्रिल अंतू यूथ ऑफ GSB तर्फेन काश्मीर ट्रिप असता. मे अंतू दुबईची ट्रिप असता. प्लॅन करायचे आमगेलो भाग घ्यायची. पूरा आमगेल्या
चंद्रकांत माम तसेच चेतनाल अम्मा बहिणी हांगा असल्यार तुम्ही स्टेजावर येयाची. चंद्रकांत मामा आसवाय चेतनाल बहिणी अम्मा असल्यार दय करून तुम्ही स्टेजावर येऊ का. चंद्रकांत माम एदरा यायचे तसेच चेतनाल अम्मा बहिणी असल्यार त्यांनी वेदिकेवर येऊ का. तसेच यूथ ऑफ GSB